Okay, so today we'll continue with the day 8. First, anyone any query from study session? तुम लोगों ने वो मैंने जो क्वेश्चन दिया था यूट्यूब का मीन्स वीडियो प्लेलिस्ट का ट्राई किया? वीडियोस ऐड हो गए वहां पर। फिर मैंने उसको कार्ड जैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला था ऑप्शनल में, दैट वो ट्राई किया सबने? हाँ सर, प्ले बटन पे प्ले होते हैं फिर वो। या डोंट वरी, आई डोंट यूज दैट मॉडल। प्ले बटन पर प्ले बटन तक कर दिया ना कार्ड? हाँ सर। मीन्स जस्ट ऑल ऑफ योर यूज अनेबल टू यूज द मॉडल, करेक्ट? नहीं सर, वो कार्ड में ही मतलब वहां पे नीचे बटन आता है ना। हाँ 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 हाँ, बटन तक हो गया, बट बटन पे क्लिक करने पे मॉडल नहीं ओपन हो रहा है ना, दैट इज द पॉइंट। हाँ सर, न्यू टैब ओपन हो गया, उसमें वीडियो ओपन था। ओके, कार्ड में नहीं होगा। कार्ड नहीं हो, कार्ड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है इम्प्लीमेंट करने में? मीन्स यू आर नॉट गेटिंग हाउ टू डू इट, और क्या समझ में नहीं आ रहा? मीन्स और यू आर नॉट गेटिंग व्हाट टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, दोनों में से कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है? हेलो? हेलो या हेलो? सर, वो मॉडल बॉक्स अभी जब हमने ये कर रहे हम लोग लूप लगाते, तो वो मॉडल का बटन भी वो लूप के अंदर ही बनाएंगे ना। हर एक वीडियो हाँ का अलग अलग प्ले बटन रहेगा, मॉडल हाँ बटन। तो हाँ, उसकी एक स्पेसिफिक आईडी देनी पड़ेगी उसको, और उसी के थ्रू हम वो मतलब मॉडल जो करेक्ट, हमारा, तो वो सही क्वेश्चन। आईडी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब आईडी यूज नहीं कर पा रहे। यस, एरर आ ओके, रहा है उसमें कुछ। हाँ, दैट वी विल सी। हाँ, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया है वो। मीन्स यू विल गेट द आईडी, क्योंकि देखो HTML CSS यू ऑलरेडी नो, बट जावास्क्रिप्ट से जब जनरेट कर रहे हो उस चीज को, तो एट मेनी पॉइंट जब कोड जनरेट कर रहे हो, सेम लाइक सेम प्रोडक्ट डिटेल, सेम लिस्ट, सेम टेबल, रो, मीन्स मल्टीपल प्लेसेस तुम ये काम करोगे। तो वहां पर अगर हमें कोई इवेंट ऐसे परफॉर्म करना होगा, तो वी विल नीड एन आईडी, बट अब आईडी जावास्क्रिप्ट से आनी चाहिए, तो दैट इज द क्वेश्चन। तो उसे भी जनरेट करना होता है, विल सी दैट। Anyone any query? Okay, so let's resolve that query. Okay, then I'll move forward. Okay, so let's complete the question first. Over here, so let's call it it's the playlist page over here, and we need bootstrap, and हम लोगों को इसमें bootstrap चाहिए होगा और jQuery दोनों चाहिए होगा।
counter. So we got the bootstrap over here. And we'll be needing jQuery. हम लोगों को jQuery कितनी नीड होगी? jQuery CDN. So we got our jQuery. तो हम लोग अपना div tag लिखते हैं. तो रो हम लोगों का जनरेट हो गया है and on this I'll be okay. Let's set the ID over here for this playlist. Okay, over here let's call it playlist. हम लोगों को सारी आईडी वहां जनरेट करना है. तो पहले हम लोग अपना वीडियोस एरे ले लेते हैं सेगमेंट में से. तो हम इस पर साइन ओवर हियर वी गॉट. हम लोगों का जो है पूरा का पूरा यहाँ पर अच्छा कंटेंट बहुत ज्यादा है and it's not indenting properly. So I should not use this editor, okay, because indentation के लिए मुझे plugin install करना पड़ेगा. So that's why I will be using something else. We have good. They got proper indentation. So we got our global array. तो हम लोग अपना स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं. इसी स्क्रिप्ट टैग में नीचे लेट्स राइट द डॉक्यूमेंट डॉट रेडी. सो वी गॉट फंक्शन. जैसे पेज लोड हो तुरंत हम लोगों को लोड करना है. सो दैट्स फॉर दैट आई विल बी राइटिंग अ फॉर लूप इमीडिएटली. ओके, इट्स videos dot length. तो हम लोगों के पास videos dot length आ गया. अब हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को क्या क्या अपेंड करना है एक बार में. So I'll be appending over here dollar in the hash playlist. फर्स्ट थिंग हम लोगों को कार्ड अप्लाई करना है. तो कार्ड के लिए यहाँ पर
हम लोगों को यहाँ पर जो है मल्टीपल डिव कॉल बनाने होंगे ना, फॉर वन ब्लॉक को एक प्लेलिस्ट के लिए एक कॉल बनेगा। जैसे एक प्लेलिस्ट एक कॉल 3 में होगा, दूसरा बॉक्स अनदर कॉल 3 होगा, थर्ड बॉक्स अनदर कॉल 3, ऐसे लाइक विल बी यूजिंग मल्टीपल बॉक्स ओवर देयर। ठीक है, सर यस हेलो। सर हम कंटेनर में ही आईडी अप्लाई करके फिर रो अपेंड करेंगे। रो नहीं अपेंड करना है, आई थिंक कॉलम अपेंड करना है। नहीं सर, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें मतलब तो प्रॉपर स्ट्रक्चर तो रो अगर ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है तो रो तो मैक्सिमम टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम से एक में क्रिएट करता है, एंड इफ यू हैव मोर देन 12 नंबर्स ऑफ कॉलम वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में खुद पुट कर देता है ना। नहीं सर, तो मतलब एक हाँ, रो में 2 कॉलम कर लेंगे और फिर डायरेक्टली रो अपेंड कर देंगे उसमें। एक रो में 2 कॉलम कर देंगे। I'm not getting your point. Can you tell me what I should write over there? और मतलब जहाँ पे हमने कंटेनर लिखा है ना वहाँ पे ड्यू में, हाँ हाँ उस पे हम आईडी दे देंगे और हाँ। उस आईडी में हम अपेंड करेंगे रो वाले डीआईवी को, और रो वाले डीआईवी में 2 कॉलम डीआईवी रहेंगे। अच्छा, उसके बाद 2 कॉलम, और फिर हम लोग जो यहाँ से ऑटो जनरेट करेंगे तो यहाँ से फिर कहाँ पर ऐड करेंगे, दोनों कॉलम में कि कैसे? वहाँ पे डायरेक्ट कंटेनर में ऐड करेंगे ना, जहाँ पे हमने आईडी कंटेनर फ्लूइड वाले डीआईवी में हाँ तो हम। फिर इसके अंदर तो ओवरराइट हो जाएगा जो है अपेंड। हाँ तो अगर अगर तुम लिखते भी हो यहाँ पर कोई चीज तो उस टैग के बाद अपेंड हो रही है तो कोई मीनिंग भी नहीं है। अगर इफ आई गिव द आईडी ओवर हियर और इसके बाद अगर तुम रो अंदर रखते भी हो कंटेनर फ्लूइड की अगर चेंज करके इफ आई मेक इट रो, यू आर सेइंग उसको रो कर देते, करेक्ट? नहीं नहीं नहीं, वो वैसे रहने देंगे, फिर अपेंड में रो करेंगे। अच्छा, अपेंड में ये रो यहाँ नहीं लिखेंगे हाँ, वो अपेंड में सीधे सीधे लिख देंगे। और वहां पर फिर मल्टीपल कॉलम कैसे जनरेट करें? सर रो के अंदर 2 कॉलम रहेंगे फिर उसमें। फिर इटरेशन में 2 कॉलम कैसे जनरेट होते हैं रो इटरेशन में किचन? सर हाँ इटरेशन में आई प्लस प्लस की जगह आई इक्वल टू आई+2 करेंगे, फिर पहले पहले रो में आई देंगे, दूसरे रो में आई+1 देंगे। ओके, दैट इज आल्सो वन ऑप्शन बट यू हैव टू राइट एक्स्ट्रा कोड फॉर दैट। हाँ, अगर तुम यहाँ डायरेक्टली रो क्रिएट कर दो तो रो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है ना। हाँ सर, अगर करते हैं ना। हाँ तो देन दैट्स नो नीड, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं करना, तो इसलिए एक्स्ट्रा नहीं ऐड होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट वी विल सी। पहले तो मैं यहाँ पर बॉडी बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ, लेट्स से पर्पल सेट कर दिया मैंने। एंड मेरे पास कंटेनर फ्लूइड है, मार्जिन ओके, मार्जिन इज नो प्रॉब्लम। So I'm directly going to add some column directly from here, ठीक है। Call 3, let's keep call 3 or call 2, let's keep it call 2 and M1 इतनी मार्जिन आएगी, ठीक है। अब इतने साइज के अंदर मुझे कार्ड ऐड करते जाना है, ठीक है। तो आई विल गो टू द बूटस्ट्रैप, यहाँ डायरेक्टली सर्च करते हैं कार्ड, वी गॉट द कार्ड कोड। इसमें से मुझे बस डिस्क्रिप्शन नहीं शो करना है ना, डिस्क्रिप्शन ये कहाँ लिखा हुआ है, पी टैग में लिखा हुआ है, तो आई रिमूव दिस वन, बाकी तो कोड ऐसे ऐसे टेक्स्ट कॉपी कर लो, यू कैन सी कॉपी एंड कॉलम के अंदर पेस्ट हो जाएगा।
हम लोगों के पास आ जाएगा ये नॉर्मल C-DAC में अभी डिस्क्रिप्शन आई डोंट वांट टू शो सो आई विल or let's keep it I will not show the description. I'll show the subtitle now. अब ऑलरेडी हम लोगों ने बस कॉपी किया है, लेट्स प्लेस द डेटा ओवर हियर। एसआरसी में हम लोगों को क्या लिखना है, डॉलर कर्ली ब्रेसेस वीडियो थंब, ओके, वीडियोज ऑफ आई डॉट इमेज का पाथ कहाँ पर लिखा हुआ है, थंब पे। मैंने कल ही बताया था ये थंब में इमेज का पाथ है, ठीक है। तो वीडियोज ऑफ आई से थंब मिल जाएगा और टाइटल के लिए ऑलरेडी वीडियोज ऑफ आई डॉट टाइटल पे टाइटल, वीडियोज ऑफ आई डॉट टाइटल, टाइटल आ गया। वीडियोज ऑफ आई डॉट सब टाइटल, then over here this is the button, so let's call it play. That's it, and you can make it anchor tag, or you can, if you want to change it to button tag, that's also fine. Done. Okay, that's it. इसमें से कॉलम जनरेट होगा कॉल टू साइज का, इसके अंदर वन रो में अराउंड call to size around 5 to 6 columns at this, yeah 5 columns around, बाकी कॉलम नेक्स्ट में जाएंगे। और लेट्स मेक इट कॉल फ्री, देखते हैं पहले कितना साइज होता है। लेट्स ओपन दिस पेज, एडजस्ट हो गए सारे के सारे, ओके फ्री, बट इट जस्ट मार्जिन इज द इशू, मार्जिन देकर रखा है। One margin is not working on that, that is the padding to this. Sir, your voice is not clear. Okay, is it audible now? Is it fine or not? Yes. Yep. तो मार्जिन देखिए रखा है, मार्जिन इज द एक्सटर्नल डिस्टेंस, तो एक कॉलम की दूसरे कॉलम से डिस्टेंस, ओके दैट अगर वो नहीं वर्क कर रहा है देन ऑब्वियसली मैं इंटरनल ब्लॉक डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इंटरनल डिस्टेंस तो भी वर्क कर ही जाएगा। सर शायद रो में पैडिंग अप्लाई करना होगा। नहीं नहीं, पैडिंग रो में, रो के इंटरनल डिस्टेंस देखो, मेरा पॉइंट ये है तो अरे ओके it might be the mic issue. Just give me a minute. अब क्लियर आ रही है नीले? तो हाँ, पैडिंग should add, actually it's not from there. I think I should use something else. So the properties of the layout. There's the column. I should okay. But offset will work on only one call. Okay. So we can have offset also, offset 1. That is the one point I can have offset, or I can set the gutters over here. So the okay, over here.
GS. That is the vertical. Okay, and so let's set the GX1 or 2 and GY over there. Okay, so we can select the gutters over there. Overlapping is creating the overlap problem. I'm also thinking, but सर रो वाले DI में पैडिंग अप्लाई करके देखिए। सर हाँ बोलो। वो मैंने गैप यूज किया था तो आ रहा है बराबर, सिर्फ लेफ्ट गैप 3 किया था तो आ रहा है बराबर। I think this is the problem with this current width, क्योंकि call 4 और 18 rem they are the different width size, that's why it's overlapping. अभी जैसे मैंने 3 सेट किया और ये by default कार्ड की साइड 18 rem लिखी हुई है ना, तो this will overlap. तो इसको अगर मैंने रिमूव कर दिया, let's check. अब एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि वो 18 rem एक्स्ट्रा था ना वहाँ पर, so it was overlapping, तो इसीलिए प्रॉब्लम था. अब मार्जिन भी सेट होगा प्रॉपरली, वर्क करेगा, मार्जिन भी वर्क करेगा. ओके, वो स्टाइल में 18 फ्रेम लिखा हुआ था इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो वो ओवरलैप कर रहा था. ओके, so we got the whole playlist over here, but I think call 4 will shoot for this specific video. Call 4 ज़्यादा हो जाएगा. Call 3 and yes, I think 1 is not good. I should use the style for that. Okay. Margin, I'll give 1 rem. अभी भी ज़्यादा हो रहा है. It is not helpful to handle. Okay, fine. I'll leave it. That's not right now. Okay. I'll increase the margin to okay. X. Okay, 3 margin and okay. the 1 margin. Okay, let's make it 2. Now, little bit okay, अभी भी थोड़ा सा spacing है इसलिए क्योंकि I'm giving 3 so and extra margin in between, तो margin की वजह से total 12 ब्लॉक में जो है adjust नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा तो next part में जाएगा obviously क्योंकि because of the 12 columns. So 3 into 4 equal to 12 होता है. ऑलरेडी मैंने 9 ब्लॉक ले लिए, बच्चे 3 उसी ब्लॉक में से उसे मार्जिन भी देना है, तो ऑलरेडी बचे एरिया में ब्लॉक नहीं तो हो सकता है. मतलब we got the button और हम लोगों के पास ही आ गया. तो if I click on this button it should open the box. तो बटन हम लोगों के पास ऑलरेडी है, इसको एंकर टैग लिखोगे, उस पर भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो आई चेंज इट टू एंकर टैग. ठीक है, इसलिए क्योंकि तुम लोग अगर कॉपी पेस्ट करते हो तो दिखना चाहिए कि देयर इज नो इशू विद दैट पार्ट. ठीक है, एंकर टैग आ गया. आप मॉडल को कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली ऐड द मॉडल एट दिस पॉइंट. ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्लास क्या लिखनी होती है, मॉडल. एंड मॉडल का बेसिक आइडिया होता है कि तुम जब बटन पर क्लिक करो then it should show the model over here. So let's click on this. तो ऊपर here इसका आइडिया क्या है कि जैसे तुम इस पर क्लिक कर रहे हो मॉडल आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, डेटा बीएस टॉगल में मॉडल होगा. डेटा बीएस टारगेट में जो आईडी लिखी हुई है वो डिव टैग ओपन होता है यहाँ पर. ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली आईडी का डिव टैग ओपन होगा. तो इन द टारगेट विद हैश वी आर राइटिंग द आईडी, किस मॉडल को ओपन करना है, किस डिव टैग को ओपन करना है, और उसका स्केलेटन ये लिखा हुआ है. ठीक है,
तो इसमें जो है हम लोगों के पास मॉडल एंड फेडिंग इफेक्ट डायलॉग कंटेंट तो क्रिएट करना है, उसके बाद ये तो उसके अंदर का कंटेंट है इतना। तो आउटर 3 ब्लॉक विल क्रिएट द मॉडल, तो हम लोग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे मॉडल क्रिएट होगा, इससे डायलॉग बॉक्स क्रिएट होगा, एंड देन विल गेट द, इससे कंटेंट आ जाएगा। एंड इन द कंटेंट अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट रैंडम कैरेक्टर, दैट्स इट, ओके। और जब पॉइंट ये है कि अभी हम लोगों ने देखा जब आईडी पर क्लिक करते तो ये मॉडल ओपन होता है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज ये लूप में लिखी हुई है, लूप में लिख रहे हैं मॉडल हम लोग, इट मीन्स लूप में हर एक टेक्स्ट बॉक्स, हर एक बटन के लिए एक अलग मॉडल जनरेट होगा। तो हम लोग सेम आईडी अगर लिख देते हैं, लेट्स से ओके वीडियो मॉडल, यहाँ पर हम लोगों ने ऐड भी कर दिया डेटा बीएस, ओके, टॉगल इक्वल टू मॉडल एंड डेटा बीएस टारगेट इक्वल टू हैश वीडियो मॉडल, जो भी आईडी दिया है। बट ये सभी में जो है सेम आईडी जाएगा, कितने जो है कितने ब्लॉक जनरेट हो रहे हैं यूआई में, हाउ मेनी ब्लॉक्स वी आर जनरेटिंग, सभी में सेम मॉडल चला जाएगा। वी डोंट वांट दैट, हम लोगों को सब में सेम मॉडल नहीं भेजना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को, क्योंकि सब में अगर सेम आईडी जा रही है तो कौन सी आईडी ओपन होनी चाहिए, दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोग क्या करेंगे, उसको जनरेट कर देते हैं। तो लेट्स मेक इट आई इंडेक्स आ रहा है हमारे पास, जब बैकएंड से डेटा आता है यू गेट द आईडी, यू कैन यूज दैट आईडी ओवर देयर फॉर दैट, ओके। बट राइट नाउ वी हैव द ith index as a unique id for this particular data, so I'll be using that ith index over here, okay। डॉलर करली ब्रेसेस से मैंने i प्लेस कर दिया वहां पर। अब i की वैल्यू जब प्लेस हो जाएगी तो फॉर each index the id is different over there, और यहाँ पर भी id डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, आई प्लेस किया। हर एक इंडेक्स में यहाँ पर क्या, अगर वहाँ 0 प्लेस हो रहा है यहाँ 0 प्लेस होगा, वहाँ 1 प्लेस हो रहा है यहाँ 1 प्लेस होगा। तो हर एक इटरेशन में आईडी जनरेट हो रही, मॉडल ओके, सभी मॉडल की आईडी डिफरेंट हो गई, और जो बटन होगा उसी के उस सेम आईडी उस इटरेशन में मॉडल को असाइन होगी। लेट्स ट्राई, क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ लिख कर आ रहा है, सभी पर एक मॉडल ओपन हो रहा है, मॉडल कंटेंट में जो लिखा था वो आ रहा है, ठीक है। दैट्स इट। तो हम लोग अपना आगे का काम कर सकते हैं। तो वीडियो मॉडल कंटेंट फिर से बताइए, क्या हुआ, मॉडल कंटेंट फिर से बताइए, तो क्या था क्या हुआ, मॉडल कंटेंट इज द क्लास। तुम्हें जो है मॉडल अगर जनरेट करना है तो यू हैव टू राइट दिस स्केलेटन, पहले मॉडल के लिए मॉडल क्लास लिखना पड़ेगा, देन दोबारा डिव टैग में मॉडल डायलॉग लिखना पड़ेगा, दैट विल क्रिएट द डायलॉग बॉक्स। उसके अंदर कंटेंट लिखने के लिए यू हैव टू राइट द मॉडल कंटेंट क्लास, वो फिक्स है। That's why they have given the skeleton कि तुम्हें वो लिखना ही है, that's why they are giving the okay, whole skeleton code की ऐसे ये क्लास यूज करोगे, this will generate this thing, getting the point। मॉडल कंटेंट में and the id is auto generated, id पार्ट समझ में कि नहीं, आईडी पार्ट id पार्ट क्लियर है, id पार्ट समझ में। नहीं सर, देखो पॉइंट क्या है, तुम बटन पर क्लिक करोगे, आईडी का पर्पस क्या होता है, किसी भी टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करें। हाँ सर, और तुम्हारे पास ये लूप में लिखा हुआ, इट मींस हर एक ब्लॉक के लिए ये सभी को आईडी अप्लाई होगा सर, सभी में मॉडल होगा, सभी को सेम आईडी असाइन होगी। तो अगर तुम इस बटन पे क्लिक करोगे, सभी में जो है डिव टैग लिखा हुआ, कौन सी मॉडल, कौन सी आईडी ओपन होनी चाहिए मॉडल की, कौन से मॉडल उस आईडी को ओपन होना चाहिए।
उस पर भी सेम आईडी, यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी तो सेम मॉडल ही ओपन होगा, क्योंकि पहला वाला ही, क्योंकि तो जब सभी को सेम आईडी गिवन है तो एक ही तो होगा सभी। एक ही ओपन होगा, भले जो है मल्टीपल मॉडल और एक ही वीडियो प्ले होगा, करेक्ट। तो हमें यूनिक आईडी करने के लिए वहाँ पर यूनिक नंबर क्या है, आई, मैंने आई दी दिया। बट जब बैकएंड से डेटा आता है तो तुम्हें बैकएंड से डेटा की यूनिक आईडी मिल जाती है, प्राइमरी की डेटा की, करेक्ट। तो वो असाइन कर सकते हो उसको, करेक्ट, वहाँ पर आईडी जनरेशन। बट अभी ओके सर, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है सर। अभी भी दूर से आ रही है, हाँ तो सही होना चाहिए। अभी भी दूर से। हाँ अभी अभी बराबर। Okay, I think I'll increase the mic sensitivity. सर आप स्लो बोलते हैं बहुत। No. Okay, is it fine now? हाँ अच्छा। मैंने माइक सेंसिटिविटी इसलिए थोड़ा सा, अभी नॉइज तो नहीं आ रहा है ना साथ में? नहीं सर, ओके आ रहा है। ठीक है, I'll increase the sensitivity, just tell me नॉइज कब आता है। नॉइज तो नहीं है अभी? हाँ सर हाँ, क्योंकि ज्यादा सेंसिटिविटी करने पे नॉइज, इट विल स्टार्ट कैप्चरिंग नॉइज आल्सो। Okay, so we got the model over here. सभी के लिए सेम आईडी होगा ना सर इसमें? हाँ, तो इसीलिए मैंने आई डाल दिया ना उसमें। अब देखो हर एक इटरेशन में आई ऐड हो जाएगा, तो पहले इटरेशन में क्या जनरेट होगा, आईडी में वीडियो मॉडल 0, आईडी क्या होगा, वीडियो मॉडल 0। दूसरे इटरेशन में वीडियो मॉडल 1, हर एक इटरेशन में आईडी डिफरेंट हो गई ना, करेक्ट। हाँ सर। हाँ, अब आई क्योंकि यूनिक था हर एक इटरेशन में, तो आई डाल दिया। तुम बैकएंड से डेटा ले रहे होगे तो वहां पर उस बैकएंड डेटाबेस से डेटा रहोगे तो उसकी आईडी होगी, वहां से तो यूनिक आईडी आनी ही है, करेक्ट। तो वो आईडी यूज करो, क्लियर। हाँ सर। यहाँ पर भी जो है मैंने डाल दिया कि उस पर्टिकुलर ith इंडेक्स को ओपन करना है, क्योंकि टारगेट में तो ये डालना होता है ना कि किसको ओपन करना है, तो ये वाले आईडी को ओपन करना होता है। तो इसी आईडी को मैंने वहां पर आई में भी डाल के रखा है, ठीक है, जनरेट हो रहा है। अब क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर अभी तो मैंने दिस इज मॉडल लिखा है, तो इसलिए दिस इज मॉडल से प्रिंट होगा, बट ओवर हियर, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। बट इफ यू वांट यू कैन हैव एनी अदर थिंग्स आल्सो, ठीक है। Otherwise, if you want to check different model आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, you can check over here. I मैंने place कर दिया है and it will play print 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, सेकंड डिफरेंट मॉडल आ रहे हैं ना आईडी के साथ, तो इसलिए ये प्रॉपर वर्क करेगा। नाउ लेट्स सेट द वीडियो टैग। इतना ही करना, लिखना HTML ही है तुम लोगों को, ऐसा कुछ जो है नया नहीं, इट जस्ट यू आर जनरेटिंग इट बाय द जावास्क्रिप्ट। कंट्रोल एंड ये जो है कहाँ पर है, सोर्सेस में, वीडियोस, ओके। वीडियोस ऑफ आई डॉट sources is the array। और sources 0th इंडेक्स है, क्योंकि 0th पे ही मिलेंगे, ठीक है। एंड देन हम लोगों ने ऐड कर दिया, लेट्स ट्राई। वीडियो ऐड हो गया एंड यू कैन प्ले इट्स फर्स्ट वीडियो। क्लियर दिस पार्ट। अभी पर डिफरेंट वीडियोस प्ले हो रहे हैं। सर वो सोर्सेज का नहीं समझ में आ रहा है, सोर्सेज 0 क्यों ले आया इंडेक्स?
मैंने जीरो कहाँ लिया सोर्सेस? ओके सोर्सेस में ये बताओ, सोर्सेस एक एरे है ना। हाँ नाउ इफ आई राइट वीडियोस आई ऑफ डॉट सोर्सेस, क्या वैल्यू मिलेगा मुझे? यूआरएल मिलेगा कि एरे मिलेगा? अगर मैं यहाँ पर वीडियोस ऑफ आई डॉट सोर्सेस लिखेंगे तो टेल मी, आई एम गोइंग, मुझे यूआरएल एरे मिलेगा कि यूआरएल मिलेगा ये वाला? अरे मिलेगा। और मुझे लिखना क्या है यहाँ पर? एरे और यूआरएल। यूआरएल लिखना है। तो यूआरएल इज अवेलेबल एट विच इंडेक्स ऑफ दिस एरे? तो सर हर वीडियो के लिए एक ही लिंक है क्या? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है, बट तुम फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, लास्ट पार्ट देखो, सब पे डिफरेंट है। वही तो वीडियो सर, जीरो से फिर एग्जैक्टली वो सबके लिए कैसे हो जा रहा है? हर बार जो है ये आई तो चेंज हो रहा है ना। अच्छा। वीडियोस ऑफ जीरो पे कौन सा जो है पूरा टैग आएगा, पूरा ऑब्जेक्ट आएगा? हाँ सर। इसका सोर्सेज आएगा, इसका सोर्सेज का जीरो इंडेक्स ये देगा, वन हाँ एथ सर। का सोर्सेज ये देगा। करेक्ट? हाँ सर। हाँ क्लियर? ठीक है। एनीवन एनी क्वेरी अबाउट दिस? तो कोड जनरेशन में आईडी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो आईडी जनरेट करना, यू हैव टू जनरेट इट लाइक दिस। बैकएंड से जब आईडी कोई आती यूनिक आईडी, यू कैन यूज दैट टू जनरेट द आईडी। और अगर फ्रंट एंड से आईडी आ रहा है तो यू कैन ऊपर हियर यूज, तो यू फ्रंट एंड में कोई इंडेक्स यूज कर सकते हो। ठीक है? एनीवन एनी क्वेरी अबाउट दिस? ये पार्ट क्लियर है सबको? और सर वो बीएस टारगेट के जो क्लास लगा है मॉडल पे, हम्म। वो क्लास काय के लिए, ये जो है बीटीएन डाटा बीएच बीएस टॉगल? टारगेट, हाँ बीएच टारगेट देखो, टॉगल के लिए इसको लिखोगे तो इट विल टॉगल द मॉडल। ठीक है? और इसको लिख रहे हो तो इट इज टेलिंग कि किस मॉडल को ओपन करना है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है? हैश वीडियो मॉडल डॉलर आई मीन्स फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इटरेशन में जीरो हो जाएगा, तो मॉडल कौन सा रहेगा? यहाँ पर ये जनरेट हो रहा है ना वो वाली आईडी, वीडियो मॉडल जीरो फर्स्ट इटरेशन में, तो ये वाला ब्लॉक ओपन, ये वाला मॉडल ओपन करेगा। तो बटन पर क्लिक करने पे कौन सा मॉडल ओपन करना है, दैट यू आर राइटिंग ओवर देयर। ओके? ठीक है। क्लियर? यस सर। So then let's start the new topic over here. तो हम लोग कल जो है jQuery के फंक्शंस यूज कर रहे थे। वी ऑलरेडी सॉ DOM मैनिपुलेशन, हाउ टू सेट द CSS, हाउ टू परफॉर्म एनिमेशन, हाउ टू यूज द jQuery परफेक्ट। तो इन सब में किसी को कोई क्वेरी? Okay, so Ajax I'm not going to cover right now. Ajax and JSON that I'll cover after server. ठीक है, उसको सर्वर पढ़ने के बाद कवर करेंगे। एंड देयर आर फ्यू टॉपिक्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ओके, दैट पैरेलली विल सी, क्योंकि नोड.जेएस भी जावास्क्रिप्ट है। ठीक है? लाइक मैथ ऑब्जेक्ट, मैथ, डेट, रेगुलर एक्सप्रेशन, all of these things we will see. Okay, so before moving forward, uh, yes, somebody messaged me in the chat, the browser object model बाकी है, BOM, correct? So हम लोगों ने क्या विंडो ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था? मीन्स जब मैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बता रहा था तो मैंने क्या विंडो ऑब्जेक्ट मॉडल, विंडो ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था क्या? ओके फाइन। So yes, ऊपर हियर
बॉम में होता क्या है कि इफ यू अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इट जस्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर व्हाट? लेट्स बॉम browser object model over here. Okay, so it what it does over there, simply creates the object for the ब्राउजर। बट आज के टाइम में जो है हमारे पास मल्टीपल टैब्स होते हैं ब्राउजर में। पहले के ब्राउजर सिंगल पेज ब्राउजर होते, बट नाउ यू गॉट मल्टीपल टैब्स इन द ब्राउजर। ओके, सो nowadays, so I'll call it nowadays for every tab of the browser, and the name of that object is window. Okay, object name is window. This is the object, and document object भी इसी का पार्ट होता है। जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने देखा था डॉम में, ओके, इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस। जैसे तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है डॉम में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जैसे डॉम एक होता है, तो डॉक्यूमेंट इज द टॉप हायरार्की, उसके अंदर पहला एचटीएमएल टैग होगा, उसका डॉम होगा, उसके अंदर हेड बॉडी का डॉम होगा, मींस ऐसे सारे ऑब्जेक्ट होते जाते हैं। डॉम इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। वैसे ही ये भी विंडो भी एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, एंड इसके अंदर डॉक्यूमेंट होता है डायरेक्टली। तो अगर तुम्हें देखना है तो डॉक्यूमेंट, आई टोल्ड यू, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में टॉप लेवल जो है ऑब्जेक्ट क्या है? डॉक्यूमेंट। और लेकिन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट किसके अंदर में है? दैट इज इनसाइड द विंडो ऑब्जेक्ट। and okay, and this object, window object, contains properties like URL. Okay, अब जो है उस टैब में क्या क्या होता है? URL होता है तुम्हारा, मीन्स वी कॉल इट लोकेशन। अब तुम फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रहे हो, दैट इज वी कॉल इट हिस्ट्री। ओके, so like this, जो पेज से रिलेटेड प्रॉपर्टी ही you'll find over there in the window object. Getting my point? What is browser object model? तो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, दैट सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, बट इफ यू आर डायरेक्टली गोइंग आउटसाइड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मींस तुमने बोला कि डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या है, तो एंड आई कॉल्ड इट विंडो ऑब्जेक्ट, उसको विंडो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। so you then you can say like okay, you are following the तो इसे विंडो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल बोल देंगे, ठीक है? दैट इज द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। उसमें कुछ बहुत उसके अंदर में, लेकिन हम लोगों को जब पेज पे वर्क करना होता है, वी वर्क विद द डॉम, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एंड विंडो ऑब्जेक्ट में हम लोग मोस्टली तभी वर्क करते हैं जब इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू विंडो। ओके, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, आई विल शो यू, ठीक है? अगर तुम्हें नई विंडो क्रिएट करना है, so I'm not writing a lot of code over here. I'm simply saying, let's say here you got h1, and let's say you are saying good afternoon, and let's go over here, okay, and let's start the script tag, okay। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक नया विंडो क्रिएट करना है, so for that I'll create the win object of that, okay, let's do it on click, okay, हम लोग on click इवेंट पर करते हैं, तो उससे क्लियर होगा कि कब क्या हो रहा है, ठीक है? Okay, so okay, over here let's say open, and okay,
तो वी गॉट अ बटन। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लिख देता हूँ। ना इसके अंदर हम लोग एक विन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड न्यू विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। and you can call it win dot open and अगर उसको कुछ राइट करना है तो you can write win dot write। उसमें तुम्हें कोई भी HTML कोड है उसको पास कर सकते हो। तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा HTML कोड नहीं है, बट आई विल बी राइटिंग बेसिक HTML कोड, ठीक है। नो, नॉट win dot write एक्चुअली। हमारे पास इस win के अंदर भी एक डॉक्यूमेंट होगा। So you have to use on that right document dot write. So it is the document dot write of that new window. Okay. फिर सेम वही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आ जाता है। व्हाट टू डू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सारी चीजें, बट विन डॉट हो जाएगा और क्योंकि तुम नए विंडो का यूज कर रहे होगे, ठीक है। तो आई से ओवर हियर, ओके, दैट्स इट एंड ओपन, लेट्स ट्राई। It is not opening the new window. I got some error, illegal constructor, line number 7. A window is not constructed because it's a normal object. Okay. Let me do it. Okay. I think I forgot that part. Okay, so that's okay. Window dot open return an object. Okay. Yes. Over here. So in this browser, it is opening in the new tab. But yes, window dot open is opening the new tab over here. So and we are writing this is dot over here new window. Okay. So ओवर हियर मैंने पहले जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था दैट वो नहीं करना है, विंडो डॉट ओपन कॉल करना है एंड दैट विल डायरेक्टली ओपन द ओवर हियर द न्यू ऑब्जेक्ट न्यू विंडो। तो अभी फर्स्ट एनीवन एनी क्वेरी अबाउट दिस पार्ट की कैसे ओपन करना है। तो पहले मैंने लिखा था जैसे न्यू विंडो, वो नहीं करना है। ओके, you have to use the window dot open that will return the object, ठीक है। उसके थ्रू जो है तुम उसके डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कॉल करके कुछ भी उसमें कोई भी HTML कोड राइट कर सकते हो। ओके, हेलो सर, या हेलो। उसमें एक ही फंक्शन है क्या ओपन? हाँ, ओपन फंक्शन नहीं, और भी फंक्शंस हैं बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट, यू कैन यूज लॉट ऑफ फंक्शंस ओवर देयर। तो अभी हम लोग ओपन यूज कर रहे हैं बिकॉज ओपन विल लाइक इन द गेट, लाइक जैसे डॉक्यूमेंट हम लोग यूज कर रहे थे डॉम ऑब्जेक्ट, तो उसमें बहुत ढेर सारे फंक्शन, बट हम लोगों ने यूज कितने किए हैं, अराउंड 3 to 4 फंक्शंस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, get element by id and that those functions, but it got a lot of functions. Same like this one, it also got a lot of properties. मैंने URL properties है and history property है। Okay, so you got a lot of I'll show you directly in the browser। यहाँ पर टाइप करो window object, it contains a lot of property। Okay, तो इसमें alert function जो तुम यूज कर रहे हो that is also over here coming from this window object। जितने भी फंक्शन तुमने डायरेक्टली यूज किए हैं पेज पर विदाउट एनी डॉट ऑपरेशन, वो सारे विंडो ऑब्जेक्ट के ही फंक्शन। अलर्ट यूज किया होगा तुमने, पॉप प्रॉम्प्ट यूज किया है, दैट इज आल्सो, इट गॉट द लोकेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
एंड ऑल द इवेंट्स, जो हम लोगों का इवेंट फंक्शन है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, पूरे विंडो पर भी तुम क्लिक इवेंट अप्लाई कर सकते हो। ओके, ओपन हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। ओके, वी जस्ट रजिस्टर्ड ओपन विन, जो भी हम लोगों ने क्रिएट किया फंक्शन, दैट इज आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द नाउ विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, getting the idea over here? Yes, sir. Got it. So yeah, so it got a lot of functions over here. It's a very जैसे तुम्हारा DOM is the big object, it's also the big object like that. Okay. But open is mostly used. Okay, तुम लोग open ज़्यादा use करोगे because most of the time you are going to open some pop-up अगर window object use करते हो, that's why. Okay, and there's one more thing you might be using, history. हिस्ट्री से यूजर कितना ओके मूव कर रहा है, मींस वेदर ही इज मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ओके, जब तुम लिंक के थ्रू मूव करते रहते हो एंकर टैग से, सो दैट थिंग यू गेट स्टोर्ड इन द हिस्ट्री, तो उसको तुम हिस्ट्री से चेक कर सकते हो। ओके, एंड इन द विंडो ओपन कहाँ पर, बस विंडो ओपन में तुम आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो मल्टीपल, लाइक व्हाट डू यू वांट। तो जैसे अगर मैंने अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, बट लेट्स से यू वांट टू ओपन अ सर्टेन यूआरएल इन दिस वन, तो मुझे आई वांट टू ओपन आई डोंट नो google.com, मे बी ब्लॉक हो, दे एज अ पॉपअप ओपन होता है कि नहीं, दैट आई हैव टू चेक। तो अभी क्या किया मैंने, उससे डायरेक्टली यूआरएल पास कर दिया, ठीक है, इट विल ओपन अ न्यू पेज और उसमें google.com ओपन हो जाएगा। ओके, तो जस्ट पास द यूआरएल, इट विल ओपन दैट ओवर देयर। क्लियर? इस तरीके से भी उसे पास कर सकते हैं। एंड द सेकंड आर्गुमेंट, ओके, सेकंड आर्गुमेंट में हम लोग एंकर टैग में जो पास करते हैं, दैट हैश ब्लैंक, ओके, और हैश पैरेंट अंडरस्कोर, इट्स नॉट हैश, और यू कैन पास द टॉप ओवर हियर। ओके, okay, so you can see the behavior, it is opening in the same, but a lot of times this behavior is also controlled by the browser, because now browser got the functionality of ad blocker pop-up, and these things are controlled by the browser. Okay, so sometimes many browser will allow, many browser might not allow this. Okay, yeah, so it depends, but you can also pass these values over there to control the स्ट्रक्चर की कहाँ ओपन करना है, कहाँ नहीं ओपन करना है। ओके, तो क्लियर दिस पार्ट, तो उसमें तुम लोग आर्गुमेंट पास कर सकते हो एंड यू कैन ट्राई। Same page means you can use the hash shelf over here, not hash, it's underscore, you can use the underscore shelf। okay, same page पर open करेगा, that is for the same page, but other behaviors are controlled by the project because they got the pop-up, no. Okay, so that's it. So anyone any query about this part? And you can also pass the name of, like over here, let's say I'll pass something like, Sir, in a case we use both DOM and BOM. actually your DOM is part of the BOM. Okay. You don't indirectly whatever you are writing, everything is part of the window object, चाहे वो DOM हो चाहे कुछ भी हो, everything whatever you are doing in that। Okay. ठीक है, even if you look at this, जो डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करते हैं वो यही तो यूज करते हैं। Yes, so sir. that is already part of this one, so indirectly you are using the BOM, it just हम लोगों ने डॉक्यूमेंट के above ऑब्जेक्ट को नहीं चेक किया है, that's it। ऑलरेडी जो तुमने DOM किया है वो सब इसी BOM का ही पार्ट है, whatever you are reading in the document object model, that is part of this BOM। okay,
सर आपने सर ये पेरेंट एंड सेल्फ सर क्या बताया? The same that page is के लिए? to denote the behavior of this कि ये पेज कहाँ ओपन होगा, ठीक है। जैसे दूसरे पेज में दूसरे टैब में ओपन हो रहा है, यू कैन कॉल इट हैश अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर सेल्फ लिखोगे तो सेम ही टैब में ओपन हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो वहां पर अंडरस्कोर पेरेंट लिखा तो वो भी सेम टैब में ही ओपन करेगा, पेरेंट टैब में। ओके, बट अगेन आई जस्ट टोल्ड यू कि पॉपअप का पॉइंट डिपेंड करता है ब्राउजर, ओके, बिकॉज ब्राउजर कंट्रोल दैट पार्ट आल्सो, ओके, क्योंकि पॉपअप कई ब्राउजर ब्लॉक कर देते हैं। So this is the window object. यही होता है window object की Sir, when we not mention new window self, then what happens? by default वो underscore blank is the default value उसको ले लेंगे। मैंने पहले तो without argument पे किया था ना। हाँ, yes sir. Without URL, without argument, तो जब without URL किया था then I was writing by the document dot write. If you are passing the URL तो उस URL को open कर देगा, okay? Same page or different? हाँ डिफरेंट, क्योंकि तुमने पास तो नहीं किया है ना No, आर्गुमेंट की कौन से पेज पर ओपन करना है, तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर ब्लैंक, so it will open in the new tab. Okay, clear? Anyone any query about this part? तो इसके बाद जो है फिर तुम्हारे पास जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट आता है, अगेन यू गॉट द डॉक्यूमेंट, जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा तो यू हैव टू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन दैट विंडो, you have to use the document, again means DOM. Okay, again you have to work with the DOM there. Anyone any query about this? सर Yes, hello. आपने जो कंसोल पे जो मेथड फंक्शंस बताए विंडो ऑब्जेक्ट में, वो डायरेक्टली विंडोज डॉट करके यूज करना पड़ेगा या विंडोज डॉट डॉक्यूमेंट डॉट? देखो विंडोज ऑब्जेक्ट के जितने भी हैं, अगर देखो नया विंडो है देन यू हैव टू यूज द न्यू विंडो ऑब्जेक्ट, अगर पुराना विंडो है देन यू पहले जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते थे, क्या डायरेक्टली हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट लिखते थे क्या, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट? नो, नहीं नहीं, बिकॉज डायरेक्टली अवेलेबल है वो फंक्शन करंट विंडो ऑब्जेक्ट, यू डोंट क्या, तो कभी तुमने विंडो डॉट अलर्ट लिखा नहीं। बट इफ यू आर राइटिंग फॉर द न्यू विंडो ऑब्जेक्ट, जैसे अभी क्रिएट किया, अब इसके लिए विन डॉट अलर्ट कॉल करना पड़ेगा अगर उस पेज पर कुछ करना है, ओके। बट फॉर द करंट यू डोंट हैव टू कॉल एनीथिंग डायरेक्ट विद द विंडो ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक है। क्लियर? So then let's move to the next topic over here. Let's talk about the date object first. Okay. And date object is again directly, and math object is purely about functions, and you have to read the functions. Okay, it should focus on reading. It should not be like I'm telling you every each and one each functions, and then you are using that only function. Okay. Over here, let's call date object over here. So date object, it's simple, create a date, okay, variable equal to by new date. So this will create a okay current date object. Whatever is the current date, it will create the object by that. Okay. Now over here you can call anything from that. Okay. So by that over here you can call date underscore variable dot, let's say get hour. Okay.
dot get minutes. Like this, we got a lot of functions over here. I'll show you. Date object is purely about function, okay, and math and all these. So let's create a date object over here. Okay. So here current date object हो जाएगा. हम लोगों ने create कर लिया. Now by the date we can call it like get. Okay. Get hours. This will print a जो भी उस date object में hour है, it will print that. Okay. And I should write dt dot. And get minutes. Okay. अब तुम्हें उस डेट में से फेच करना है ईयर, so you can use the get full year. They must have that. Okay. अब तुम्हें उस डेट ऑब्जेक्ट में से फेच करना है, let's say get current day of the week. Okay, so it will print that. Okay, date, not of the week. Okay, date. Then you want the month over here, so get month. These functions are there to extract data from that. Okay. You can say from the date object I'm getting this. Okay, I should also print the whole duty object over there. Okay. ओके, सो dt ऑब्जेक्ट ये प्रिंट हो रहा है. अब उसमें से मैंने जो है क्या फिक्स किया, लाइक 15 आवर्स. ओके, 8 मिनट. ओके, हियर इज 2022 सेकंड. ओके, दिस इज द सेकंड डे ऑफ द वीक. यस, डेट टाइम ही बताता है. यस मैम. एंड यू कैन क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट फॉर द एनी गिवन डेट. जैसे तुम्हें जो है अपने कहीं बिकॉज ब्राउजर पे जब भी यूज करना होगा, सो यू नीड द डेट ऑब्जेक्ट. तुम एज अ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, बट ग्राफ ड्रॉ करना हो या कहीं पर ऐसे ड्रॉ करना हो, सो यू नीड टू क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट फॉर दैट गिवन डेट, जो डेटाबेस से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है. सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट बाय पासिंग द आर्गुमेंट, वी कैन क्रिएट डेट ऑब्जेक्ट फॉर एनी गिवन डेट ऑल्सो. ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. फिर उसके बाद यही फंक्शन फिर अवेलेबल है. ठीक है, you can say 5 is the over here, it's a month. Okay, so 0 to 5. Yes, so 0 to 5 it's a 6 month. Can I know day after 4 days? Day after 4 days तुम्हें खुद डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. Okay, directly you cannot use it. It's not like calendar. Okay, yeah. It's a date object, it's not calendar. So yes sir, if you want to know day after 4 days, so you have to create the current date object. तो उसमें से फिर next 4 day का नया डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फिर उससे आइडेंटिफाई करो. मीन्स लेकिन तुम्हें you have to identify like that. ठीक है, getting the idea? ऐसे नहीं होगा. करंट डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उससे जो है उसमें प्लस 4 day करो, then you will get the idea. So like this you got the functions, lot of functions. I'll be directly using these functions in the console. ठीक है, अब मेरे पास जैसे dt है, तो dt जो है मेरे पास उसके साथ ढेर सारे functions हैं. ये look at this. अब seconds है, you can use the seconds, but you got also formats over here. UTC format, UTC date over here. This is the actually not yet to
you can see two formats over here. टू डेट स्ट्रिंग में जाओगे तो ऐसे प्रिंट करेगा, टू लोकल स्ट्रिंग पर जाओगे तो डेट स्ट्रिंग ऐसे प्रिंट करेगा, and to local string पर जाओगे so it will print like this. Okay, and you got to over here normal, over here normal to over here to ऐसे print करेगा. Okay, to UTC string पर जाओगे so it will print like this. So you got multiple method format to print it, so for that you can use these functions. Okay, over here to local date string. Okay, to date string. So like this, a lot of functions are there to print in this format. Okay. So I'll pass this over there to the notes. Okay. And I'll make it daily. So I mentioned few functions, but over there you have to read lot of. Okay, तुम्हें जो है सारे functions browser के console को तुमने देखा, how I was using to get the function list. So browser के console, even your IDE is also giving you the suggestions of the functions. So use those functions. Okay. Like so here I'm not just directly telling you कि month के लिए get month use करो, get full year use करो to get the full year. So these are the basic functions. You should try to find out these functions from the documentation or from the consoles or from the IDE help. Okay, so try to get these functions, and I'm going to give assignment on this one because okay, you have to find this. And let's create data object for okay. For given date. अगर तुम्हें डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फॉर गिवन डेट, देन यू शुड यूज द ओवर हियर. ओके, सो फॉर गिवन डेट करंट डेट ऑब्जेक्ट के लिए. ठीक है, तो लेट्स ट्राई. तो उस केस में हम लोगों को कैसे क्रिएट करना होगा. सो विल बी क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस. ओके, वेयर लेट्स से न्यू डेट इक्वल टू ओवर हियर न्यू डेट. ठीक है, तो अब यहाँ पर न्यू डेट ऑब्जेक्ट में हम लोग पहले पास करते हैं, जैसे तुम्हें क्रिएट करना है लेट्स से 2023 के लिए. ठीक है, एंड लेट्स से ऑफ 4th अप्रैल. 4th मीन्स it the month counting starts from 0. 4th means May. Okay, so 4th month. Okay, comma, you can directly pass it as a number also. Okay, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, you should pass it as a string. ठीक है, एंड थर्ड लेट्स से डे मुझे 1st अप्रैल का चाहिए. ओके, देन इफ यू मींस इसके आगे अगर तुम्हें नहीं पास करना है, इट विल क्रिएट द ओके नाइट 12 for that date. Okay, otherwise तुम अगर इसके आगे की डिटेल्स पास करना चाहते हो, you can pass it like okay hours. Let's say I want 15 hours. Okay, over there minutes pass करना है, pass it, otherwise leave it. Okay, and let's try to print this in this format over here to local string. Okay, so let's try. देखो लास्ट में अभी क्या हो गया, मैंने बोला था ना 5th 1. ओके, 2023. तो 2023 का 5th month that is May. ओके, एंड फर्स्ट ओके
1 मई 2023 अराउंड 15 लिखा था, तो इसने 3 o'clock PM का 3 PM का टाइम क्रिएट कर दिया, डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर. You can create a manual date object like this, and then you can again use all these functions on that. Okay, so got the point about date object. सर Yes, hello. अप्रैल आना चाहिए था ना वहाँ पे. मंथ 0 से काउंट होता है. ओके सर. Okay, clear this part. I will mention directly that in the notes also. Month counting starts from the 0. Okay. तो सर वो उसमें किस टाइप की वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा, तो उसका फॉर्मेट वगैरह नहीं मिलता है क्या? फॉर्मेट नंबर, हम लोग नंबर मतलब लेते हैं. DDMMYY वगैरह. नहीं नहीं, ऐसे आर्गुमेंट पहले ईयर, दैट आई एम गोइंग टू राइट कि पहले ईयर पास करना है. ओके, दैट आई एम गोइंग टू राइट इन द नोट. ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला आर्गुमेंट तुम्हारा ईयर रहता है, सेकंड मंथ, थर्ड डे, फोर्थ आवर, मिनट, देन सेकंड. ओके, तो इस तरीके से तुम पास कर सकते हो टू क्रिएट न्यू डेट. ओके, क्लियर? Anyone any query about this part? अब इसके बाद इससे तुम क्रिएट कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूज ऑल दीज फंक्शंस अगेन. And yes, someone asked me about the next 4 days की next 4 day fourth day क्या होगा over here. Okay, so for that, अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है नेक्स्ट फोर्थ डे क्या होगा, देन यू हैव टू गेट द करंट डेट ओवर हियर. ठीक है, so yes, I'm thinking of giving that in the assignment. Question correct है. So I'll give you directly in the console पे करना कैसे. Okay, so अभी मेरे पास dt है, that is giving का current date. ठीक है, तो मैंने इसको, मुझे आइडेंटिफाई करना था कि गेट ओवर हियर कि नेक्स्ट फोर्थ डे में क्या होगा. सो आई गॉट दैट गेट सेकंड नहीं. ओके, टू there's a function over here. Not time. And they are talking about the time string, and I don't want that. Okay, that's the function. Get time actually. Okay. So get time will give us the millisecond. Okay, of that the current total millisecond कितने हो रहे हैं. ठीक है, so it is taking a base over here. ठीक है, उससे इसने total counted millisecond में current date को convert कर दिया. Okay, so if I'm converting into the next 4 day की next 4 day चाहिए ना, तो how many milliseconds होते हैं 4 days में. So let me convert it. Number of 24 hours. Okay, 4 days है ना, तो 4 days को 24 hours में convert कर देते हैं. And then for 24 hours में every hours will get how many minutes? 60 minutes. And every 60 minutes I'll get 60 seconds, and every 60 seconds I'll get 1000 milliseconds. Okay, so this is the after fourth day we'll get कितने millisecond हो जाएगा. Correct, हाँ. And for that it's July 2 after fourth day.
तो उसमें हम लोग डेट ऑब्जेक्ट में हम लोग मिली सेकंड भी पास कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैंने कैलकुलेट किया कि टोटल कितने मिली सेकंड हो रहे हैं एंड आई सिंपली पास इट टू द डेट ऑब्जेक्ट। तो नया डेट ऑब्जेक्ट बन गया आफ्टर द 4th डे। इसको हम लोग एक वैर न्यू डेट में स्टोर कर दिया एंड दिस इज द जुलाई। ओके, clear this part, how to calculate the next 4 days. So but you have to first get the current date, उसको millisecond में convert करो by the get time function, then and I'm going to give you this kind of assignment. Okay, remember this. तो यहाँ पर जो logic use किया है, remember that part. Okay, how to use that. उसके बाद मैंने उसको मिली सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर करंट डेट को मिली सेकंड में कन्वर्ट किया एंड देन डायरेक्टली कैलकुलेटिंग। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ मिली सेकंड? रिमेंबर दिस पार्ट, आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस ऑन नॉट डेज, आई एम गोइंग टू रिव्यू ऑन मंथ ऑल्सो। मंथ का लॉस होता है तो मंथ में सोचना तुम्हें ये पड़ेगा कि कौन सा मंथ 30 डेज का है, कौन सा 31st डे का है, दैट इज द प्रॉब्लम। And if I go into the year, you have to think about which one is leap year, which one is not leap year, कौन सा month 30 days, कौन सा month 31st days, that creates problem. So the better idea, convert to millisecond. ठीक है, ज्यादा मत जो है सोचो मत कि कौन सा ईयर है कौन सा मंथ है, डायरेक्टली कन्वर्ट इट टू द मिलीसेकंड, परफॉर्म द कैलकुलेशन, उसके बाद उससे वापस नई डेट क्रिएट कर दो। यू डोंट हैव टू राइट एनी कंडीशन, क्योंकि मिलीसेकंड की यूनिट तो नहीं चेंज होने वाली ना, मंथ की यूनिट चेंज होती है फ्रॉम डे। ओके, मींस सम मंथ्स आर ऑफ लाइक 32 days 31 days, सम ऑफ आर 30 days, बट मिलीसेकंड में ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि कोई मिलीसेकंड छोटा हो जाएगा कोई मिलीसेकंड बड़ा हो, दैट्स फिक्स यूनिट, so use that unit directly. ठीक है, for the calculation. So anyone any query about this logic? तो डेट ऑब्जेक्ट में हम लोग मिली सेकेंड भी पास कर सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट द न्यू डेट ऑब्जेक्ट बाय दिस। ओके, तो तुम लोग यहाँ पर मिली सेकेंड भी पास कर सकते हो, ठीक है, टू क्रिएट द न्यू डेट ऑब्जेक्ट। Anyone any query about this? डेट ऑब्जेक्ट पे वर्क कर सकते हो। Let's talk about math object. For the math it's easy. Okay, so you can over here let me check. I don't think so math is a constructor. Yes, so math is not constructor, so check. Okay, over here. Okay, do not create object of math library. Okay, math object, क्योंकि it's not constructor. Okay, because constructor नहीं. Okay, it's not constructor. Okay, now question over here. तो हम लोगों को मैथ के फंक्शंस कॉल करने, जस्ट टाइप द मैथ एंड यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द फंक्शन इन द कंसोल। यू कैन सी तुम्हें जो है यहाँ एक्सपोनेंशियल, यू गॉट द वैल्यू ऑफ ई, if you type math.py it will give you the pi value. If you want the log base 2e value, you can see already all these parameters are written. तुम्हें इसे याद करने की नीड नहीं है। You got the browser, you got the console, इसको कहीं से तुम लिख, you are not installing anything, you are not directly, it's available in every browser, just type the math। ठीक है, मैथ ऑब्जेक्ट के सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर ये अवेलेबल, so it means if you use the math.py, so it will give you the math dot my spelling mistake, math is in m capital lower. Okay, math.py, math dot over here log 10e base 10e,
So what is the value of that? Already all the values are predefined. You can directly use this value. स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 1/2 की वैल्यू क्या होगी. Okay, so over here already all the over here functions are defined. Means variables are defined. You can directly use. For the absolute value you directly got the APS function. For the cos, over here you got the function. Okay, for the cosine, absolute cosine absolute. Okay, over here sin h. Okay, tan okay, seal, that seal means it's about seal and floor. Two functions you'll find over here. One is a seal and another is a floor. तो अगर तुम्हारे पास 10.5 है तो इसको floor so seal and floor, two values. Floor will give you the 11 and seal will give you the 10 for that 10.5. Okay, Sir, ulta. seal, no, Seal 11. seal is the top value, correct? Yes, top is the 11. My mistake. Yes, top is the 11, floor is the 10. Yes, seal is the top value, so it's 11 and floor is the 10. Yeah, correct. And over here, so you can all the functions are available. Just look at this log to calculate the log. Okay, to get the random number. So and to calculate the power, and if you want to check the augment, so look. Okay, so you can see it says length 2. It means over here I can pass 2 argument into this function. Okay, and if you look at the max, that takes 2 argument, and if you look at the over here, where is that SQRT, that takes 1 argument. Okay, and the random takes 0. Okay, so over here you getting the idea how to read that over here function. So let's say if you want to generate call the random, okay, so just simply call the random, it will give you the random value, and if you multiply it by 100,000, so you can say you are getting the random value between 1 to 1000. Okay, and then you can call it math dot floor. Okay, to get the random value between 10 to 0 to 1000, और इससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, so you can say like you are getting random value between 0 to 100. Okay, so if you want to calculate SQRT over here of any number, because it takes 1 argument, so you can pass the SQRT of 4. Okay, 15. So you can calculate the square root of any number also. Okay, and over here their power function takes 2 arguments, so you can calculate like 2 comma 3. 22, I passed it 22. Okay, 2 comma 3. So by that you can read the number of argument over here, length is. Okay, let's say over here some, I'm not going into the sinusoidal. Okay, trigonometric function, but you can try trigonometric functions over here. Okay, logarithmic functions are available also, that takes 1 argument. This takes also 1 argument. This takes base 2 also takes 1 argument. Base also takes 1 argument. Sine function takes 1 argument. So getting the idea over here how to read it. Yes, sir. So that I'm telling you the way to find this function. तुम्हें ऐसा नेट ओपन करके तुम्हें ऐसा नहीं सर्च करना है कि मैथमेटिकल लाइब्रेरी में कितने फंक्शन है. All the functions supported by the mathematical library in your browser, you can directly get it by this typing math okay over there. तुम्हें उसके बाद तुम्हें अगर समझना है कि how to use that function, for that you can use the internet, but directly तुम्हें just math टाइप करो, you'll get the function, क्योंकि मैथ इज द ग्लोबल वेरिएबल ऑफ दैट ब्राउजर. ठीक है, और जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम लोग टाइप करके देख सकते हैं कंसोल में. मैथ इज द ग्लोबल वेरिएबल, टाइप दैट एंड यू विल गेट ऑल द वैल्यूज. ओके,
Over here I pasted a lot of functions. Okay, over here, but I'll give you the assignment on this one because it's like I'm telling how to calculate the mathematics like pi value, okay, random value and min max value. So then if to get the use case, you can use the okay other websites, but I'll say don't use the okay other websites to find the function name. You got the over here console का proper use करो and you can say okay if you want to let's say अगर तुम्हें कभी string का function create करना है जैसे let's say मुझे जानना है कि there's a string और मुझे string के functions नहीं याद है. It happens string के functions नहीं याद है. Just type the x dot and you can see you got all the functions related to the string. जो भी functions string पर apply हो सकते हैं, you got the list of those functions directly. And now most of the functions को तो तुम्हें by the name you can identify what that does. Like bold, caret, concat, fixed, okay, font size, includes, italics. A lot of functions you can directly identify कि वो function करता क्या. Let's say अगर तुम्हें कभी if you are creating a var एक number create किया, okay. And अब number पे कितने functions apply हो सकते हैं? You can see you can apply these functions on the number. So you don't have to search over Google की नहीं search that which function. यहाँ से function list मिल रही है. If you don't know how to use that, then use that. Okay. Because we got a lot of function, a lot of library. You will not be able to remember all of the libraries, all of the functions. So try it, then learn how to find that function. How to utilize the available documentation, available okay consoles, available tools. Okay. For the math object, I'm going to give you the assignment, and for the grid object, I'm going to give you the mostly assignment, okay, because those are mostly function related things. Okay. And anyone any query about this part? Any part? Regular expression is remaining. So right now, what is the date? Because it should not be like okay. So let's start regular expression later. Okay. Let's start with the nodejs. Okay, हम लोग nodejs से start करते हैं. Now we are starting nodejs. Okay. So for the nodejs, first go to the nodejs website. Just click on the link and you'll get the nodejs download over here. तो यहाँ पर जैसे मुझे I'm using the Linux, so that's why I'm getting download for Linux. मुझे download for Linux आ रहा है. तुम लोग Windows यूज कर रहे होगे, so you'll get the download for Windows. Okay. और अगर फिर भी नहीं आता तुम्हें download for Windows option, so you can go to the other link and here from here you can download the installer for 64-bit if you are using 64-bit system. Okay. Clear this part? So from this website you can install download and you can install and you know how to install softwares on the Windows. Next. Yes, So you sir. can install by that. ठीक है. Just don't do one thing. लास्ट में एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल चोको. उसको उस चेक बॉक्स को क्लिक चेक मत करना बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू इंस्टॉल दैट लाइब्रेरी और उसकी हम लोगों को जरूरत नहीं है. ओके. तो लास्ट में लास्ट पेज पर एक चेक बॉक्स आएगा इंस्टॉल चोको करके, एक बड़ा सा सेंटेंस होगा बट दैट लाइब्रेरी नेम इज चोको, CHOCO. तो उसको जो है अनचेक, वो बाय डिफॉल्ट अनचेक रहेगा. इट विल आस्क यू टू चेक इट, डोंट चेक. ओके. बाकी यू कैन बाकी ऑप्शंस तुम चूज कर सकते हो. ओके. So you can install from this website and then open your CMD window. तुम लोगों को अपना CMD window open करना है इंस्टॉलेशन के बाद और उस पर रन करना है node space -b. And if you are getting some version over there, it means तुम्हारा nodejs work कर रहा है. अपना Windows में CMD window open करो. If you are using Linux, open the terminal and directly type the node space -b. Okay.
और किसी ने VS कोड अगर अभी रन किया है तो दे मस्ट डिलीट द टर्मिनल ऑफ द VS कोड एंड देन क्लोज द VS कोड। ओके, पहले इंस्टॉलेशन कंप्लीट करो, देन ओपन द VS कोड। ओके, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सर 18.40 करने का है डाउनलोड। 18.40 नहीं नहीं, वर्जन LTS वर्जन डाउनलोड, LTS डाउनलोड करो। LTS, okay? LTS Okay. okay. LTS means long term support, you can say. Long term support means the schedule is for around 5 years. जैसे 18 अभी करंट एक्टिव है तो they'll support it till okay few years, but okay जो 16 चल रहा है that is LTS को वो जो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट तक कहते हैं, ठीक है। मीन्स उसमें क्रिटिकल बग्स को अराउंड 30 मंथ तक वो सॉल्व करेंगे। ओके, बट जो करंट वर्जन होता है ओके 6 मंथ, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट ऊपर हियर। ओके, सर ये विंडो इंस्टॉलर डॉट MSI और डॉट zip विंडो बाइनरी। MSI इंस्टॉलर 64 बिट का इंस्टॉल करना, ठीक है। ओके 64 बिट डाउनलोड कर लो MSI इंस्टॉलर, डोंट यूज zip। ओके, LTS ही करना है ना, करंट वाला नहीं अपना। हाँ हाँ LTS करना है। सेटिंग डिफॉल्ट ही रहेंगी ना, कोई क्या हुआ? चेंजेस हाँ, सेटिंग? कोई चेंजेस नहीं है करने हैं, जस्ट लास्ट में जो है वो इंस्टॉल चोको क्लिप बोलेगा तो डोंट चेक। ओके ओके, Vishal, if you want to use that, then use that also. Otherwise, you can use the CMD window also. Okay. सर Yes. CMD में वर्जन 16.15.1। हाँ, that's fine. ओके वर्जन अगर लिख कर आ रहा है, it means installation successful है। अगर नहीं लिख कर आ रहा है, then successful नहीं। Okay. ओके सर, हो गया। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स, इसको चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना नहीं है नहीं, सर। इंस्टॉल चोको लिखा होगा ना वो आगे। इंस्टॉल चॉकलेटी हाँ, ऐसा लिखा है। चॉकलेट ही लिखा है। इट्स अ चॉकलेट, डोंट इंस्टॉल इट, डोंट चेक। ओके, ओके आई थॉट इट्स चोको, इट्स चॉकलेट ही विंडोज पर आता है ऑप्शन। अनचेक करना है ना सर दोस्त को। क्या हुआ? हाँ, अनचेक अनचेक करना है। हाँ हाँ ठीक, ठीक है। इट्स इंस्टॉल चॉकलेट ही, नॉट चोको। ओके, तो अनचेक करके नेक्स्ट कर दो। हेलो सर। क्या हेलो? सर CMD पे कौन सी कमांड चलानी है? हाँ, वो सामने लिखा है नोड स्पेस -v। वही। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या लिखना है? नोड स्पेस -v। नोड -v ना। यस, नोड स्पेस -v और -v यू कैन कॉल इट। -v ओके सर। अगर वर्जन नहीं आ रहा है देन देयर सम प्रॉब्लम विद द इंस्टॉलेशन। अगर नोड इज नॉट डिफाइंड। कैन यू शेयर योर स्क्रीन देन? या श्योर।
इंस्टॉल हो गया है ना? Yes. देन ओके। सर वर्जन v16.15 तुमने होना है। नोड.js का टर्मिनल ओपन किया है, ओके ये वर्किंग है तुम्हारे पास ऑलरेडी, ऊपर लिख कर आ रहा है ना वेलकम टू नोड.js, सो दैट्स Yes, sir. ओके दैट्स फाइन। आई टोल्ड यू अबाउट द cmd विंडो पर टाइप करने के लिए, No, अगर sir, नोड.js it's का not. टर्मिनल आ रहा है देन यू इट्स फाइन, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ओके। It's node.js window. हाँ हाँ दैट्स फाइन, ओके Okay. ये टर्मिनल अगर आ रहा है देन आल्सो इंस्टॉलेशन डन हो चुका है, ठीक है। यू कैन स्टॉप इट। वर्जन CMD दिखा रहा विंडो है पे वैसे। क्या लिखना है सर? क्या हुआ? नोड स्पेस CMD हाइफन वी, नोड स्पेस हाइफन वी, एंड वर्जन अगर आ रहा है देन इट्स फाइन, देन इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है, ठीक है। ओके सर ओके। हेलो सर, जैसे पहले यूजर नेम था वैसे ही आया सर नीचे। यूजर नेम तो जैसे पहले वैसे ही आया था ना। हाँ हाँ, वर्किंग है क्या? वर्किंग कैसे आ रहा है? स्क्रीन शेयर करो कैसे? हाँ हाँ शेयर करो। विशाल वेट अभी मैं डिस्कस करता हूँ उससे, ठीक है। या देन फाइन, हाँ आ रहा है, वर्जन आ रहा है ना नोड स्पेस हाइफन वी पे 16.15.1, हाँ देन फाइन इंस्टॉल हो गया। थैंक यू। ओके ओके सो लेट्स फोकस ओवर हियर। अभी तुम लोग इंस्टॉल कर लेना, जिन लोगों का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है लेट इट डाउनलोड, एंड हम लोग बाद में इंस्टॉल, ओके विल सी द इंस्टॉलेशन लेटर। तो हम लोग लेट्स डिस्कस व्हाट इज नोड.js फर्स्ट, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो हम लोगों के पास ब्राउजर में हम लोगों के पास कौन सी लैंग्वेज एग्जीक्यूट हो सकती है? विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्राउजर कैन एग्जीक्यूट, और हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्राउजर कैन एग्जीक्यूट, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। That is the programming language. That is not programming language only. HTML is not programming language. JS. .NET. No. No. ब्राउजर में सिर्फ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जावा, .NET, everything is for the backend. Okay. None of them will execute in the browser. Only JavaScript. So there are two languages, that is HTML, CSS, and one programming language, that is JavaScript. Total 3. So browser supports only 3 languages. Okay, 2 of them is language and 1 of them is programming language, that is JavaScript. ठीक है, तो JavaScript एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, एंड ब्राउजर एग्जीक्यूट ओनली JavaScript प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, इन द ब्राउजर। और कोई लैंग्वेज सपोर्टेड नहीं है वहां के लिए, बिकॉज दोज लैंग्वेजेस आर नॉट डिजाइंड फॉर दैट पर्पस। ओके, क्लियर तुषार?
वो वहां पर नहीं एक्सक्लूड करते हैं। ओके jQuery is the library of JavaScript. जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की लाइब्रेरीज भी होंगी। अब तुम्हें जो है डॉम मैनिपुलेशन, एनिमेशन और इफेक्ट्स के लिए jQuery लाइब्रेरी मिल गई। लेट्स से यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ, तो उसके लिए d3.js लाइब्रेरी मिल गई। लेट्स से यू वांट टू ड्रॉ द सम काइंड ऑफ एनिमेशन, then you got lot of gaming libraries for that. Okay, and let's say you want to perform some you got the graph, means lots of libraries are there. If you look at the, अगर तुम्हें जानना है lots of libraries of the JavaScript, you can directly search for over here. Awesome JavaScript, and over here I'll use 2 links over here. Yeah, awesome JavaScript. Over here, so they are talking about to form the project type है, because you can see these are the major project type. ठीक है, पहले तो इतना तो ये सभी जावास्क्रिप्ट हैं एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोजेक्ट टाइप। तो हम लोग इसमें से रिएक्ट यूज करने वाले हैं। ओके, so they are talking about the first project type, तो उसके according they will give me the language. So let's say I'm going to use the React in future, तो उसके साथ में ढेर सारी लाइब्रेरी, मोस्टली most of the time I use हम लोग रिडक्स लाइब्रेरी भी पढ़ेंगे एंड रिएक्ट तो पढ़ेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज मटेरियल यूआई एंड रिएक्ट राउटर विद द रिएक्ट एंड अदर लाइब्रेरीज, बट these 2 things I use. Okay, but we are learning bootstrap, so I'm not going to use any other UI for that. And other the libraries हैं, we are going to use nodejs, and it will get lots of list. अभी इन्होंने बहुत कम दिया हुआ है, only 53 package proposed. Okay, but I'll show you that website. ठीक है, let's go to this one. तो हम लोग पहले देखते हैं, that is for the UI loader, bundler, okay, not type checker, framework, okay, assertion, coverage, runner, normal, framework. All of these are front end library. ये जितनी लिखी हुई है, this is the list of front end library. Like nodejs is the visual library, is allowed to create node-based editor in the browser. Okay, a graph engine or draw flow is create data flows easily and quickly. Okay, so compiler focused virtual DOM, it's fast. Inferno, it's a JavaScript library, modern user face, extremely fast. So a lot of libraries are here. And these are the simply okay, over here gaming engine, that is also data visualization के लिए most of the जितनी भी libraries you are getting over here, all of them are front end, means browser based library. Okay, most of them, not all of them. ठीक है, so let's say जैसे मैंने अभी D3 बताया था तुम लोगों को, D3 is the very famous one. Okay, but 3.js, yes, it's a 3D library. Chart.js, okay, paper.js, pie chart create करना, pie. Okay, so you can see lots of libraries are here, and they just got okay, not all of them, okay, few of them even the famous one. सर So yes, hello. ये मतलब जावास्क्रिप्ट जो है वो ये लैंग्वेज है और ये सारी लाइब्रेरीज है, jQuery और node.js वगैरह। No, nodejs is not the library, jQuery is the library. I'll come to that nodejs part. Okay, nodejs is not the library, nodejs is more like environment. Okay, ओके, और फिर वो रिएक्ट वगैरह वो भी वैसे React is the environment है। library, Express is the library. Okay, तो सर ये लाइब्रेरीज में क्या है, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शंस स्टोर्ड है ऐसे ही ना? हाँ, जिससे तुम्हें जो है स्क्रैच से कोड ना लिखना पड़े। ओके, और ये सारे लाइब्रेरीज का काम एक ही होता है या अलग अलग लाइब्रेरीज का काम अलग अलग You होता got है? lot of tasks. Let's say अभी हम लोगों ने डेट ऑब्जेक्ट देखा, करेक्ट? हाँ, लेकिन अब डेट ऑब्जेक्ट से अगर तुम सारी पार्सिंग खुद लिख रहे हो, देन यू हैव टू लाइक ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि अभी हमको 4th डे का जो है डेट चाहिए कि क्या था,
So we did the calculation correct by ourselves. But अगर just think about अगर हम लोग उसे complex बना देते हैं, अगर उसी कैलकुलेशन को अगर मीन्स ही इज आस्किंग फॉर ओके जो मुझे तो पूरा मंथ चाहिए कि उस मंथ में क्या क्या कितने डेज हैं और किस दिन मंडे पड़ रहा है, मुझे चाहिए कि नेक्स्ट ओके 10 डेज के बाद किस डेट को मंडे पड़ रहा है। लाइक दिस इफ वी मेक इट कॉम्प्लेक्स देन तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा ना फ्रॉम स्क्रैच। बट यू गॉट द डेट लाइब्रेरी, इतनी डेट लाइब्रेरीज है to parse the date. Now question is कौन सी तुम्हें यूज करनी है। देखो parse manipulate display dates in JavaScript, ओके उसके लिए तुम्हें 2 डेट को कंपेयर करना, यू गॉट द लाइब्रेरी। टाइम जोन बेस्ड हो गया, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने देखा दैट इज नॉट टाइम जोन बेस्ड, यू कैन से टाइम जोन बेस्ड ऑल्सो हो गया। ओके देयर सम कैलकुलेशन, अगर तुम्हें जो है नॉर्मल कैलकुलेशन मिली सेकेंड बेसिस कैलकुलेशन करना और काउंटडाउन बेसिस, तो एवरी लाइब्रेरी गॉट डिफरेंट पर्पस। Okay, like date dot fns, it does something. You have to read the documentation of that. That's why I'm always saying read the documentation. You can see they can create an array of multiple date objects, and उसके बाद तुम उसको sort कर सकते हैं, and all these functionalities are given by this library. You can see. तो सर अभी ये जो डेट वगैरह था वो jQuery के अंदर नहीं, वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का डेटा ऑब्जेक्ट था। मैथ वाज द नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, हम लोग मैंने कभी jQuery नहीं यूज किया उसके। इफ दैट इज द पार्ट ऑफ jQuery आई विल से ओके, बट ओके दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द jQuery, दैट वाज पार्ट ऑफ द प्लेन जावास्क्रिप्ट। ओके अब लेकिन jQuery में तो यूज हो गई ना, jQuery भी तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, करेक्ट? हाँ, तो ऑब्वियसली यूज होगा, करेक्ट। अब देखो तुम्हारे पास स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के तुमने फंक्शन देखे, बट स्ट्रिंग पार्सिंग इज नॉट दैट सिंपल। अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स पार्सिंग हो गया, लाइक यू आर राइटिंग अ वेब क्रॉलर काइंड ऑफ थिंग, ओके देन या तुमने कुछ पेज को रीड करके पार्स करके उसमें कुछ डेटा, यू नीड लॉट ऑफ ओके मींस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। फॉर दैट यू कैन से लॉट ऑफ लाइब्रेरी यू गॉट फॉर जस्ट स्ट्रिंग, फॉर द नंबर कैलकुलेशन you got, like रेशनल नंबर के लिए अलग लाइब्रेरी, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अलग है, पॉलिनोमियल्स के अलग है, getting the point. But if I ask you to perform polynomial calculation by your by the simple number that we got, it's not easy. We have to write the whole function for that also, correct? yes. But it does it, उसके लिए लाइब्रेरी यूज है। मनी टाइप कैलकुलेशन, करेंसी इज ऑल्सो नंबर, उसके लिए अलग से लाइब्रेरी है। फॉर अकाउंटिंग दैट इज ऑल्सो नंबर बेस्ड थिंग, for that you got the library. Getting the point? Over here you can see for the browser storage के लिए भी libraries हैं, colors के लिए भी अलग से libraries हैं। okay, this generates the colors, multiple language browser जो support करते internet internationalization के लिए, for that you again got the libraries। okay, so it's that is अगर तुम single page application, we will see that in the React। okay, हम लोग देखेंगे that is that part। so getting the idea, you can see you got the adding voice command on using speech recognition, so you got this library। you can see which how to use it, you just have to use the documentation of that, and you can see how to use it। so for that उन्होंने अपना script tag दिया, you have to use that, और उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे लिखना होगा। so they are talking about the syntax, ठीक है? getting the idea? तो कैसे करना है, so that is the point, but you have to read the library, that's why I said read the documentation, practice, क्योंकि हर एक टास्क के लिए you are not going to write the code from scratch, and इस लैब यहाँ पर जो लिस्ट है ये बहुत छोटी है। मैंने पहले बताया जावास्क्रिप्ट you'll get every month you get famous library, every day you are getting lot of libraries, or every month you get a famous, and every 6 months you'll or every year you'll find there's a very okay famous library जो तुम अभी तक यूज कर रहे थे उससे भी much better library got that, every year it happens। so you cannot switch directly to that library, but अगर तुम्हारे पास requirement है then ऐसा नहीं फिर तुम पूरा time waste करके फिर उसको library learn करो। the point is that you should learn okay the way how to utilize that library to, okay, because they are just libraries। तुम्हें जावास्क्रिप्ट तो आता है ना, लाइब्रेरी में बहुत तुम्हें बस फंक्शन नेम ही तो पता करना है और उसमें आर्गुमेंट क्या होता है वो पता करना है, एंड देन
what is the return value of that function, ये पता करना है, and what is the syntax of writing that function, इतना ही तो पता करना है, that you can read the documentation. तुम्हें लैंग्वेज तो नहीं पढ़नी है ना पूरी. Getting the point? That's why focus on documentation. Okay, because you are in JavaScript and it's not like your C, C++ or Java जो तुमने पढ़ा उसमें mostly you are not using any extra library. You are focused on the mostly logical aspect. और तुम्हारे पास सिर्फ इनपुट आउटपुट के लिए एक ही चीज था, दैट इज टर्मिनल. ठीक है, तो वहाँ UI नहीं सोचना था, you are focused on the logical aspect, but here you got the UI. So you have to think about okay input boxes. You have to think about you might be getting data from some okay from the backend. How to show that? How to process that? Now processing point again problematic. Process तुम्हें front end में करना है कि back end में करना है? Getting the point? So multiple aspects you have to think over here. So you need to use the libraries. Okay. तो यहाँ तो मैंने सिर्फ एक पार्ट दिखाया, and the awesome.js they are giving a lot of libraries, but again over here, but not very long. Okay, but if you want to actually search the nodejs library, so for that I'll suggest this website. Okay, this contains the installer. हम लोग बाद में इसे डिस्कस करेंगे, but अभी just to give you the idea कि बैकएंड में, बैकएंड के लिए अभी तो मैंने फ्रंट एंड जो है बताया कि फ्रंट एंड में क्या लाइब्रेरी कर सकते हैं. Let's say backend में you want to perform some kind of parsing, let's say request parsing, or let's simply call it big framework. Okay, web framework हम लोग लिखते हैं, ठीक है. And how many packages we got over here? Just typing one word, I got 6,000 packages over here. Lot of libraries इसमें से, and Express is the famous one. Okay, बहुत सालों से famous है. But Fastify is also famous. Vue is the front end. Kova is also alternative of the Express. Sales is also alternative of the Express. React is not alternative of Express. We'll discuss that, but yes. Okay, this is a mix of front and back end. Okay, over here you can see if you want to create interactive music, you got over here some library. So every library got their different purpose. सभी लाइब्रेरी का एक डिफरेंट पर्पस होता है, सभी लाइब्रेरी कुछ टास्क इजी कर रहे होते हैं. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट लाइब्रेरी के, तुम्हें जो है उस लाइब्रेरी को यूज करना है नहीं करना है, दैट. ओके, सो यस, हेलो. वहाँ पे बाजू में PQM है, वो क्या? हाँ, दैट इज पॉपुलैरिटी, क्वालिटी एंड मेंटेनेंस. अगर जो है P ज्यादा है तो इट मींस द पॉपुलैरिटी ऑफ लाइब्रेरी इज मोर, क्वालिटी इज मोर, और मेंटेनेंस. सो यू कैन कैलकुलेट बाय दैट. यू एक्चुअली यू कैन चेक कि तुम्हें लाइब्रेरी यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो मेंटेनेंस होना चाहिए लाइब्रेरी का, ये तो याद रखो, प्लस क्वालिटी भी होनी चाहिए, देन यूज दैट लाइब्रेरी. ओके, क्लियर? ओके, फाइन. तो इसलिए मैं बोलता हूँ फोकस ऑन द डॉक्यूमेंटेशन. यू आर इन द नोडजेस एंड इवन जो है अभी हम लोग एक्सप्रेस पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग कुछ लाइब्रेरीज यूज करेंगे. मींस व्हाटएवर यू गॉट इन द सिलेबस, मोर विल सी मोर लाइब्रेरीज. ओके, फ्रॉम दैट, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा हम लोगों का. विल बी नीडिंग दैट दोस लाइब्रेरीज. ओके, नाउ क्वेश्चन इज, लेट्स कम बैक टू द नोडजेस. ओके, let's take 10-minute break and let's start nodejs then after that. Okay, fine. Okay, so let's take 10-minute break. हम लोग 10 मिनट बाद मिलते हैं, and that is right now 4 o'clock, so let's start at 4:10. Okay, सर. yes, hello. सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया ये लाइब्रेरीज वगैरह का. अभी मतलब जावास्क्रिप्ट हम हमारी लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेज बनाते हैं. हाँ. और ये जो नोड.js है वो क्या है exactly? मैंने बताया नोडजेस. अभी तो हम बैकएंड पर आ भी नहीं रहे, तो नोडजेस स्किप द पार्ट. अभी तो ब्राउजर की बात कर रहे हैं, तो ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है, करेक्ट, वेब पेज बनाते हैं, करेक्ट. हाँ. Let's say if I ask you to perform if I ask you to create a over there chart, तो चार्ट कैसे क्रिएट करोगे? चार्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप. नहीं, चार्ट तो नहीं होएगा उससे. चार्ट मतलब कैसा, वो अपना
पाई ग्राफ और ये जो ग्राफ होते हैं वगैरह नहीं, वो तो नहीं होगा बूटस्ट्रैप वगैरह से, नहीं jQuery से भी नहीं होगा। नहीं jQuery सर। फॉर द डॉग मैनिपुलेशन, बेसिक एनिमेशन, बेसिक इफेक्ट। यस। तो उसके लिए चार्ट की ढेर सारी लाइब्रेरी, you have to use that. Okay, let's say I ask you to create a calendar on the page. कैलेंडर जो इनपुट बॉक्स पे आता है वो नहीं। हाँ आई आस्क यू टू क्रिएट अ कैलेंडर जिसमें तुम ड्रैग करके सेलेक्ट कर सको चीजों को बॉक्सेस। तो लाइक काइंड ऑफ शेड्यूलर जैसा पेज नहीं होता है, जैसे शेड्यूलर तो बड़ा सा कैलेंडर पेज में ओपन हो जाता है। इफ यू लुक एट द गूगल कैलेंडर, तो हाँ पेज पे ओपन हो जाता है बड़ा सा कैलेंडर, ठीक है। उस पे अगर सेलेक्ट करना है, हाउ टू डू दैट? वो भी, हाँ बराबर, वो भी नहीं करना आएगा। ओके, so it means you need some library। ऐसा नहीं कि हम लोग प्लेन जावास्क्रिप्ट से नहीं लिख सकते। इट मीन्स इन द जावास्क्रिप्ट फर्स्ट यू डिजाइन द यूआई। चार्ट के लिए भी पहले तुम्हें कैनवास यूज करके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, मीन्स वाई इक्वल टू mx प्लस, मीन्स ग्राफ का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा विच ड्रॉ द लाइन ओवर देयर। और उसके बाद तुम्हें जो है अपना डेटा पास करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर वो ड्रॉ करेगा ग्राफ। तो नॉट लाइक दैट, बट यू आर राइटिंग द होल मैथमेटिकल फंक्शन ओवर देयर टू जनरेट, टू ड्रॉ द लाइंस, करेक्ट? यस। तो उससे अच्छा लाइब्रेरी यूज कर लो ना, क्योंकि एक लाइन वाई जो है सिंपल लाइन के लिए ठीक है, बट इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ पाई ग्राफ, ओके दैट इज द प्रॉब्लमेटिक। ओके, तो देन लेट्स से अभी जैसे मैंने डेट का एग्जांपल दिया, अभी लाइक आई आस्क हिम टू टू कैलकुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन टू डेट्स और 5 डेट्स और सॉर्ट द डेट्स बाय सम, ओके बाय द मंथ। तो तुम सॉर्टिंग बाय डेट के लिए बाय द मंथ तुम्हें पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा ना सॉर्टिंग का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेट तो सॉर्ट नहीं होने वाली, वो तो डेट ऑब्जेक्ट, करेक्ट? बराबर। तो उसके लिए यूज द लाइब्रेरी, क्योंकि jQuery से भी नहीं होने वाला, बिकॉज jQuery डजंट डू दैट, करेक्ट? हाँ हाँ तो लाइब्रेरी यूज करो। समझ में आया लाइब्रेरी का पर्पस क्या है? हाँ सर, समझा। तो तो now, अभी जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट की भी उसकी लाइब्रेरी है ना? नहीं, जावास्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज। अब उसी लैंग्वेज में जो है तुम्हें अगर सब कुछ लिखना है तो यू कैन राइट इट फ्रॉम द स्क्रैच, बट टास्क को परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कोई टास्क परफॉर्म करना है, आई टास्क यू टू जनरेट द ग्राफ इन द जावास्क्रिप्ट। अब डायरेक्टली या तो पूरा कोड स्क्रैच से लिखो जावास्क्रिप्ट में, अदरवाइज यूज द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जिन्होंने ऑलरेडी फंक्शंस लिखा हुआ है, यूज दोस फंक्शंस। ओके सर। ठीक है, समझ में? हाँ सर। तो नाउ पॉइंट इज, क्या तुम सारी की सारी लाइब्रेरी सीख सकते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं, thousands of them are there। and I just told you कि every week you'll get every month you'll get some famous library, every year you'll get okay very famous library जो बहुत ज्यादा popular है, lot of people are using। तभी नहीं सीख सकते हो। so the point is to better idea क्या है, find a way to means how to use the library। अगर तुम यही सीख जाओ then ज्यादा बेटर है, करेक्ट? हाँ बराबर। तो दैट्स उसका, इसीलिए मैंने बोला कि डॉक्यूमेंटेशन रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। तभी मैंने जो है jQuery में डॉक्यूमेंटेशन रीडिंग के लिए जो है सिंटैक्स बताया, हाउ टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन। हाँ ओके, that's why I told you, that's why I'm mostly focusing on the documentation, to read the documentation, check the documentation में क्या लिखा है and then utilize use that too। okay, अगर वो नहीं पढ़ सकते हो then you don't know how to use the library and you cannot, then you have to use the library जो तुम्हें पता है, नई यूज करने में बहुत प्रॉब्लम है। ओके, हाँ बराबर। ठीक है and yes, okay। यस सर। हेलो सर।
Okay, so let's start the session. Okay, so now we were talking about the nodejs. Okay, so we discussed just that in the front end browser में सिर्फ एक ही लैंग्वेज वर्क करती है, दैट इज जावास्क्रिप्ट. एंड देयर इज अ जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने एक चीज देखा, इट इज नॉट लाइक अदर लैंग्वेज. पहले से जावास्क्रिप्ट इज डिजाइंड फॉर द ब्राउजर, तो उसमें इवेंट ड्रिवन है क्योंकि यूजर डिपेंडेंट पार्ट होता है. जस्ट ओके थिंक अबाउट, उसमें कोई जो है थिंग्स से लीनियर ऑपरेशन नहीं कर सकते ना, कि नहीं पहले ये टास्क होगा देन ये टास्क होगा देन ये टास्क होगा, बिकॉज यू गॉट लाइक टू टेक्स्ट बॉक्स एंड देयर टू फॉर्म्स और दो बटन है. यूजर किस पर पहले क्लिक करेगा? यूजर कैन क्लिक ऑन एनी ऑप्शन. यू हैव टू फॉलो द इवेंट ड्रिवन वे. So that was the profit of that language. तो क्या तो कुछ लोगों के दिमाग में है, okay, लेट्स मूव द जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में डिजाइंड है और इसका पूरा का पूरा जो इसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, दैट इज डॉम. ओके, डॉम बनता है एंड लॉट ऑफ फंक्शंस आर फॉर द ब्राउजर. मींस द होल आइडिया इज अबाउट डायरेक्टली ब्राउजर. इसमें यूजर इनपुट के लिए डायरेक्टली कोई फंक्शन, इफ यू वांट टू टेक यूजर इनपुट आइदर टेक इट फ्रॉम द अलर्ट बॉक्स, डायलॉग बॉक्स से लो, क्योंकि बिकॉज इट इज डिजाइंड फॉर द ब्राउजर. तो नॉर्मल लैंग्वेज जैसे नहीं, इट इज डिजाइंड फॉर द यूआई, नॉट फॉर टर्मिनल. ओके, now then the point फिर एक पॉइंट आता है. ओके ओके, सो दिस व्हाट दिस फीचर. तो फिर कुछ लोगों ने सोचा क्यों क्यों ना इसे बैकएंड में मूव करते हैं. So when I say use the term front end and back end, all of you are getting what is front end and back end. First tell me this. Not sure. Okay. जब होता क्या है कि अभी जैसे ये ब्राउजर है, ओके, लेट्स कॉल इट द सर्वर. हमारे पास जो ब्राउजर है, अब हम लोग ठीक है एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू द लॉट, ओके, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ. So this is the browser, okay, and let's call it this is the server, and the browser is the client over here. So let's simply okay, discuss the point. जैसे हम लोग www.google.com ओपन कर रहे हैं, so what browser is doing? Browser is asking the Google server give me the page for that, okay, for the of google.com. Then server is giving the google.com page. तो page actually है किसके पास? google.com सर्वर के पास. एंड ब्राउजर ने google.com सर्वर से वो पेज मांगा है, देन यू आर गेटिंग दैट पेज. देन और उस पेज में क्या लिखा है एक्चुअली? HTML कोड, CSS कोड, जावास्क्रिप्ट कोड. तो एज अ टेक्स्ट फाइल वो रखा कहाँ था? सर्वर के पास. ब्राउजर ने उस डेटा को मांगा, ब्राउजर गॉट द डेटा. नाउ ब्राउजर इज रीडिंग दैट डेटा, क्योंकि ब्राउजर को समझ में आता है HTML कैसे पास करना है एंड CSS कैसे पास करना है. एंड देन ब्राउजर ने पूरा डॉम क्रिएट किया, रेंडर किया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट कोड को भी एग्जीक्यूट किया उसने. करेक्ट? यही हो रहा है. यही स्टेटमेंट तो समझ में आ रहा है जो मैंने अभी सब बोला. तो द HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड जो ब्राउजर में रन कर रहा है, दैट इज एट द सर्वर एज अ टेक्स्ट फाइल रखा हुआ है, एज अ टेक्स्ट. ब्राउजर सर्वर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, सर्वर के पास बस रखा हुआ है. ब्राउजर इज आस्किंग, ब्राउजर ने सर्वर ने उसे एज अ डेटा दे दिया. अब तो और वो हम सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्राउजर को सिर्फ तीन ही चीज समझता है: HTML CSS जावास्क्रिप्ट. ओके, जावास्क्रिप्ट ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML CSS दे आर द लैंग्वेज. ओके, तो बैकएंड में अब जो है हमारे पास सर्वर, जिसने ब्राउजर ने जिस सर्वर से रिक्वेस्ट किया कि गिव मी द पेज. ओके, सो लेट्स से सर्वर के पास एक हार्ड डिस्क है यहाँ पर. लेट्स कंसीडर सर्वर के पास खुद की हार्ड डिस्क है, ठीक है. एंड ओवर हियर लेट्स कॉल इट एसटीडी. तो उस पे पेज रखे हुए. ओके, तो उसमें आई एम ड्राइंग द पेज ओवर हियर. ठीक है, मैंने इसे ड्रॉ कर दिया पेज. तो लॉट ऑफ पेजेस आर देयर, और ये पेज किसके रखे हुए हैं? एज अ टेक्स्ट फाइल, HTML CSS तीनों कोड रखे हुए. ठीक है,
अब जो है ब्राउजर जब सर्वर से बोल रहा है कितनी वन ऑफ दिस चीज, तो सर्वर भी एक प्रोग्राम हुआ विच इज एक्चुअली जिससे ब्राउजर ने मांगा, दैट इज रनिंग ऑन द डिफरेंट पीसी, जैसे गूगल सर्वर बोलते दैट इज रनिंग ओके ऑन सम डिफरेंट लोकेशन, उसी का एड्रेस है www.google.com, google.com इज द एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन, तो वो एक सर्वर का लोकेशन का एड्रेस है www.google.com, ठीक है, इस सर्वर का एड्रेस। तब ब्राउजर ने जब इससे मांगा ओके तो गिव मी द पेज, अब सर्वर को रिक्वेस्ट दिख रही है कि हाँ somebody is asking me the page, तो सर्वर भी एक प्रोग्राम हुआ which is going to parse की, अच्छा ही तुम्हें ये वाला पेज चाहिए तो आई एम गोइंग टू fetch data that page from the hard disk and give it to you, or I might generate that HTML CSS JavaScript at runtime and then give it to you, क्योंकि हम लोग ऐसा कोड भी तो लिख सकते हैं which can generate the text, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला HTML CSS JavaScript is the text over here, हार्ड डिस्क से फाइल जा रही है, तो एज अ फाइल जब वो जा रहा है फाइल का डेटा, तो आई कैन जनरेट द फाइल एट रन टाइम ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम फेचिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, उसे जनरेट करके फिर भी भेज सकते हैं, बट देयर शुड बी अ लैंग्वेज, वो प्रोग्राम होना चाहिए किसी लैंग्वेज में विच इज डूइंग दिस, तो बैक के तो वी कॉल इट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रंट एंड, जो चीजें हम लोग फ्रंट एंड के लिए डिजाइन कर रहे हैं दैट इज द फ्रंट एंड एंड दिस इज फॉर द बैक एंड। नाउ इफ आई आस्क यू दिस, तो अगर हम लोगों को ये डिसाइड करना हो, अगर हम लोग कभी भी बोलते हैं कि सर्वर पे हम लोग फाइल डेवलप कर रहे हैं ओके दीज फाइल्स, अगर वी आर सेइंग दैट वी आर डेवलपिंग दीज फाइल्स ओके ऑन द सर्वर HTML CSS JavaScript, तो एक्चुअली वी आर डेवलपिंग द फ्रंट एंड, क्योंकि ये फाइल एक्चुअल में एग्जीक्यूट कहाँ होंगी, ब्राउजर में, तो जो कुछ ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है दैट इज द फ्रंट एंड, विच एवर एग्जीक्यूट्स एट द सर्वर एंड दैट इज द बैक एंड। ये पार्ट तो क्लियर हुआ, व्हाट इज फ्रंट एंड व्हाट इज बैक एंड, एनीवन एनी क्वेरी, द जनरल सिनेरियो। और मैंने एक लाइन और बोला है, हियर वी गॉट सम प्रोग्राम, यहाँ पर जो प्रोग्राम है दैट कैन फेच डेटा फ्रॉम दिस फाइल, वो फाइल को फेच करके रिटर्न कर सकता है, और it might generate this kind of files at runtime also, this kind of HTML CSS JavaScript code at runtime also, ये जो सर्वर है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, एग्जीक्यूशन एग्जांपल ऑफ एग्जीक्यूशन इन सर्वर एंड, आई एम कमिंग टू दैट पार्ट, ठीक है, अभी हम लोग सर्वर पे नहीं जा रहे डायरेक्टली, बट द पॉइंट ओवर हियर इज अबाउट फ्रंट एंड बैक एंड, ओके आई विल कम टू दैट पार्ट लेटर, ओके ओके, सो ओवर हियर वी गॉट दिस, हम लोगों के पास ये सर्वर है एंड आई टोल्ड यू वी कैन हैव दिस सर्वर, इट शुड बी डिजाइन्ड इन सम लैंग्वेज, तो यहाँ पर कौन कौन सी बैकएंड में लैंग्वेज चलती है, तो जितनी भी आज तक तुमने लैंग्वेज पढ़ी है, लेट्स से PHP जावा .NET ओके nodejs python मींस डॉट, जितनी भी पढ़ी है सब कहाँ के लिए एक्चुअली, बैकएंड के लिए, नन ऑफ देम आर फॉर द फ्रंट एंड, यस बैकएंड में वो SQL इज आल्सो फॉर द बैकएंड, वो डेटाबेस के लिए, तो बैकएंड के बैकएंड में भी डेटाबेस होता है, तो वहां पर एक्चुअली इन द बैकएंड ऑफ द बैकएंड तुम्हारा डेटाबेस यहाँ आता है, तो इससे कम्युनिकेट करने के लिए यूज द SQL, ठीक है, तो उसके भी बैकएंड में जाता है, क्लियर, नन ऑफ देम आर फॉर द फ्रंट एंड, तो समझ में आ रहा है, जो हम लोग एप्लीकेशन वेबसाइट जो भी देखते हो एक्चुअली सब में कौन सी लैंग्वेज कहाँ पर एक्चुअली प्लेस हो रही है, कहाँ आता है फिर क्या हुआ, डेटा स्ट्रक्चर कहाँ आता है, डेटा स्ट्रक्चर इज द, यस देखो तुम्हारे पास बैकएंड है पाइथन या जावा या PHP या .NET, डेटा स्ट्रक्चर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा, करेक्ट, तो डेटा स्ट्रक्चर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा, अब तुम्हें वो डेटा अगर फ्रंट एंड में स्टोर कर रहे हो, लेट्स से यू गॉट, तुम्हें ग्राफ कोई ड्रॉ करना है, ठीक है, तुम्हारे पास 1000 यूजर्स हैं, अब उसमें से जो है तुम्हें 1000 यूजर से फ्रंट एंड में तुमने फेच कर लिया बैकएंड से मांगा गिव मी द 1000 यूजर्स डिटेल, बैकएंड ने तुम्हें 1000 यूजर्स डिटेल दे दिया, अब ब्राउजर के पास 1000 यूजर की डिटेल है, अब उस 1000 यूजर्स में से तुम्हें इमीडिएटली फेच करना है पर्टिकुलर यूजर, तो कैसे फेच करेंगे, नॉर्मल एरे में रहेगा तो स्लो हो जाएगा, करेक्ट,
So we can use the hash map for the hash something hash related database or some graph related database, data structure not database. तो वो कहाँ पर जा रहा है इस समय डेटा स्ट्रक्चर? So data structure is the concept that is not related to any language. उसका पर्पस क्या होता है कि so that we can efficiently store whether it's a small data or large data. तो अगर फ्रंट एंड में कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट में वो डेटा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। बैक एंड में कर रहे हो तो विच एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग इन द बैक एंड तो वो बनेगा। अब फ्रंट एंड में करोगे तो लेट्स से यू गॉट 1000, अब यूजर ने क्लिक किया एंड इमीडिएटली यू वांट टू शो द इफेक्ट 1000 यूजर्स हैं, तो इमीडिएटली के लिए तुम्हें ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे इमीडिएटली यू कैन फाइंड दैट डेटा, स्टेप्स में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, यू आर रनिंग लॉट ऑफ इटरेशन, ऐसा ना करना पड़े। तो फॉर दैट वो काम फ्रंट एंड में करेंगे, but most of the time you don't need that thing, okay, in the front end. But yes, that is also scenario क्योंकि तुम्हारे पास 1000 यूजर से efficiently store करना है and want to efficiently fetch, so I'll do that in the front end. Clear, तुषार? And backend के लिए तो फिर backend में अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं तो then I'll do that in the backend. Backend में जो भी language यूज कर रहे हैं I'll create data structure in that part. Clear? Yes, sir. So this is the language over here. Remember, अब जैसे मेरे पास PHP है, so PHP is very good at generating HTML, CSS, JavaScript at runtime. जैसे मैंने बताया ये फाइल तुम क्रिएट करके हार्ड डिस्क पर स्टोर कर लो, देन आस्क द जो भी PHP में लिखा है सर्वर प्रोग्राम एंड दैट ओके सर्वर ने वो फाइल फेच किया और दे दिया तुम्हें, दैट इज आल्सो वन ऑप्शन। और PHP कोड उसको रन टाइम में जनरेट भी कर देना विद द डेटा, ये भी तो पॉसिबल है, क्यों पूरा HTML कोड पहले से लिखो। इट माइट जनरेट ओके द होल HTML पेज और उसके बाद दे देगी, इट माइट मिक्स मल्टीपल HTML पेज, उसको एक नया HTML पेज बना के तुमको दे दें ब्राउजर को, इट इज आल्सो पॉसिबल। तुम्हारे इससे जो है बार बार नए नए HTML नहीं लिखना पड़ेगा ना, दैट इज मच बेटर। तो दैट इज द प्रॉफिट ऑफ दिस लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट जो है तुम्हारे जावा तुम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ओके। .NET आई थिंक देखा हुआ होगा, नहीं तो यू आर गोइंग टू लर्न इन फ्यूचर, ओके, आई डोंट नो बट यू आर गोइंग टू यूज इट एट सम पॉइंट, ओके। एंड PHP पाइथन यू हैव तुम लोगों ने नहीं देखा, बट दे आर आल्सो सिमिलर लैंग्वेज, ओके। जस्ट PHP is purely designed for this purpose, so PHP is good at doing this, okay, task. Python does a lot of automation, so Python is also fine, but सबका पर्पस यही है फ्रंट, इसीलिए मैंने पहले को बोला है फ्रंट एंड में कोई भी अल्टरनेटिव नहीं। इफ यू थिंक यू गॉट एनी अल्टरनेटिव फॉर द ब्राउजर, नो अल्टरनेटिव, व्हाटएवर लैंग्वेज यू नो दैट इज जस्ट फॉर द बैक एंड। फ्रंट एंड के लिए तो वो लैंग्वेज है ही नहीं, ठीक है, वेदर इट्स जावा, .NET, व्हाटएवर यू नो, C, C++, व्हाटएवर, सब बैक एंड में जाएगा, कोई फ्रंट एंड में नहीं जाने वाला, सब फ्रंट एंड में सिर्फ जावास्क्रिप्ट, ओके। तो फ्रंट एंड में तुम्हारे पास अल्टरनेटिव है नहीं, इट मींस नाउ वी आर मूविंग ओके मोर टुवर्ड्स इंटरनेट। तो हम लोग मोस्टली वेब एप्लीकेशन पे मूव कर रहे हैं काइंड ऑफ, जब हम लोग इंटरनेट की तरफ मूव कर रहे हैं काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन, so it means you have to do some coding at some point in the JavaScript. Yes, the backend language क्योंकि वो कोड जनरेट करते हैं HTML, CSS, JavaScript, so to some extent they can decrease your reduce your headache about that part, means तुम्हारा कुछ टास्क वो या कुछ पॉइंट रिड्यूस कर देंगे, ओके, कुछ एक्सटेंट तक, ओके, कुछ लेवल तक, बट एट सम पॉइंट अगेन यू हैव टू यूज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वो जनरेट कर, बट कितना जनरेट कर देगा, कस्टमाइजेशन फिर भी तुम्हें करना ही, लिखना तो पड़ेगा ही ना, लिखना तो है, तो कोई अल्टरनेटिव नहीं, इसलिए जावास्क्रिप्ट तो आना चाहिए, ओके। अब उसमें और भी, अब तुम फ्रंट एंड में तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है, तुम्हें कुछ शेड्यूलर बनाना है या कुछ और भी करना है, okay, let's say you want to create some 3D effect, show the 3D effect, for that you need a library। अब उसके लिए फ्रंट एंड में उस जावास्क्रिप्ट में सारा कोड तो लिखोगे नहीं, देन यू विल बी यूजिंग लॉट ऑफ लाइब्रेरीज। तो बूटस्ट्रैप, jQuery सब कहाँ पर जा रहा है, किसकी लाइब्रेरी है? बूटस्ट्रैप इज फॉर द CSS, वो इसकी लाइब्रेरी। तो वेयर यू आर यूजिंग बूटस्ट्रैप, फ्रंट एंड में लाइब्रेरी यूज करो। jQuery किसकी लाइब्रेरी है? JS की, कहाँ यूज कर रहे हो? फ्रंट एंड में। क्लियर? रिएक्ट एंड एंगुलर इज ऑल्सो फॉर द फ्रंट एंड। मैंने क्या बताया, यहाँ पर अगर मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट डेवलप कर रहा हूँ बैक एंड में बैठ के,
तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं हम लोग बैकएंड में डेवलप कर रहे हैं, सो आई एम डेवलपिंग दिस फॉर द बैकएंड। एग्जीक्यूट तो उसे फ्रंट एंड में ही होना है ना, तो इट मीन्स दैट इज द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो कोड बैकएंड में एग्जीक्यूट होगा, डेवलप दोनों बैकएंड में होते हैं, बट जो ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है दैट इज द फ्रंट एंड, जो बैकएंड में एग्जीक्यूट होता है दैट इज द। तो रिएक्ट और एंगुलर भी बैकएंड में डेवलप किए जाते हैं, बट एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, फ्रंट एंड में। तो दे आर द फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। ओके, ना हम लोगों को ये तो समझ में आया कि फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट। हुआ क्या कि जावास्क्रिप्ट वाज गुड एट ओके बाय द इवेंट ड्रिवन प्रोसेसिंग के थ्रू इट वाज वेरी गुड। ओके, एंड इवेंट ड्रिवन प्रोसेसिंग के थ्रू ये बहुत अच्छा था। तो एंड इट वाज प्योरली डिजाइंड फॉर द ब्राउजर, बैक एंड के लिए तो थी ही नहीं। तो लॉट ऑफ पीपल गॉट द आइडिया व्हाई नॉट टू मूव जावास्क्रिप्ट टू द बैक एंड। अब बैकएंड में तो ब्राउजर होता नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट तो रन नहीं कर सकते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज डिजाइंड फॉर द ब्राउजर। करेक्ट, उसमें ना यूजर इनपुट ले सकते हैं ना जनरल प्रोसेसिंग का, तो हम लोगों ने देखा ही नहीं कुछ जावास्क्रिप्ट में। मोस्टली वी डिड डॉम मैनिपुलेशन एंड ऑल दीस थिंग्स, क्योंकि इट इज रियली फॉर डिजाइन फॉर दैट पर्पस ना। अब उसको जब तुम तो दे गॉट द आइडिया कि व्हाई नॉट टू मूव दिस जावास्क्रिप्ट इन द बैकएंड। तो अब उन्होंने क्या सोचा, ओके सो लेट्स डू वन थिंग। ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, इट मींस ब्राउजर गॉट सम इंजन दैट इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द जावास्क्रिप्ट। जैसे जावा लैंग्वेज के लिए जेवीएम होता है, एंड ओके सी गॉट कंपाइलर, उसके बाद डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है। पाइथन गॉट समथिंग, पीएचपी गॉट समथिंग, एवरी लैंग्वेज गॉट समथिंग टू एग्जीक्यूट। वैसे जेएस लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउजर, तो ब्राउजर के अंदर में कुछ ऐसा होगा दैट इज एग्जीक्यूटिंग द जावास्क्रिप्ट। So that's the engine. Okay, so and that engine is designed by the browser companies. Okay, like Google Chrome ने बनाया तो अपना engine बनाया हुआ है, that is for the Chromium browser. So, Chromium browser, Opera browser, and Edge browser, Chromium browser, Edge, Brave, Opera. Okay, all of the Chrome, all of them are based on Chromium browser. तो सब में same engine use हो रहा है, but Firefox is the separate, वो इस पर नहीं डिपेंड करता, तो दैट इज यूजिंग सेपरेट इंजन। ठीक है, तो सेपरेट, तो सभी लोग एक जावास्क्रिप्ट इंजन यूज कर रहे हैं। सो दे गॉट द आइडिया व्हाई नॉट टू डू वन थिंग, लेट्स एक्सट्रैक्ट दैट इंजन फ्रॉम द ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर में से वो इंजन सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, अलग से एग्जीक्यूट करते हैं उसे। और ओके, इट्स लाइक यू गॉट अ कंप्लीट कार, और उसमें से तुमने उसका इंजन निकाल लिया, एंड यू आर नॉट गोइंग टू रन दैट इंजन एज अ सेपरेट। ओके, लेट्स से फॉर समथिंग एल्स। ओके, सिर्फ वो इंजन को आइसोलेटेड अलग रन करना चाह रहे हो सेपरेटली। तो जब तक कार के लिए था तो इट वाज इंटीग्रेटेड विद लॉट ऑफ क्लच, गियर एंड ऑल दोस फंक्शनैलिटीज, बट अब तुमने उसको निकाल लिया है, अलग से रन करोगे, सो यू हैव टू ऐड सम फीचर्स टू इट। तो उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि नाउ यू आर नॉट गेटिंग फ्यूल फ्रॉम दैट कार के जो वो टैंक होता है उससे तो फ्यूल नहीं आएगा। यू डोंट हैव द क्लच गियर एंड ऑल द स्टार्टर एंड ऑल दोस थिंग्स, so you have to add that some features to that engine now। तो वैसे ही अब उन्होंने क्या किया, वो इंजन जावास्क्रिप्ट का ब्राउजर से निकाल लिया, एंड नाउ दे आर एग्जीक्यूटिंग इट सेपरेटली, ओके, ऑन द पीसी डायरेक्टली विदाउट ब्राउजर। अब वो विदाउट ब्राउजर रन कर रहे हैं, तो इट मींस दे हैव टू मॉडिफाई द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आल्सो एंड इंजन आल्सो, क्योंकि लैंग्वेज तो ब्राउजर के लिए डिजाइन है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को मॉडिफाई किया टू एग्जीक्यूट ऑन द बैक एंड। ओके, तो जब उन्होंने उस लैंग्वेज को मॉडिफाई किया तो एग्जीक्यूट इन द बैकएंड, दे क्रिएटेड अ सेपरेट एनवायरनमेंट फॉर दैट, एंड दैट आफ्टर दैट मॉडिफिकेशन जो नई लैंग्वेज बन रही है, ओके, दैट इज अगेन द जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ। सिंटैक्स सब कुछ सेम है, इट जस्ट हम लोगों ने फीचर्स निकाल दिए जो कुछ ब्राउजर के लिए थे, थोड़े से फीचर्स ऐड कर दिए जो कुछ इसके लिए थे, मीन्स जो बैकएंड के लिए चाहिए थे। जो ब्राउजर के लिए होते थे वो सारे फीचर्स निकाल दिए, डॉम रिलेटेड फीचर्स सब कुछ निकाल दिए, बिकॉज वी डोंट हैव द ब्राउजर नाउ, तो उसको निकाल दिया। अब क्या कर दिया मैंने, उसमें से डॉम रिलेटेड सारे फीचर्स निकाल दिए, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, विंडो ऑब्जेक्ट, ये सब खत्म हो गया। इवेंट ड्रिवन के लिए ऑन क्लिक फंक्शन, ये सब तो यूआई के लिए होता था ना, वो सब तो है ही नहीं, क्योंकि ब्राउजर ही नहीं है। सीएसएस में सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ प्लेन जावास्क्रिप्ट बचा। अब उसमें ऐसे फीचर्स ऐड करना दैट इज रिक्वायर्ड, लाइक फाइल हैंडलिंग थिंग। ओके, इट इज डिजाइंड फॉर द सर्वर पर्पस, टू सर्वर थिंग, ओके, सर्वर मॉड्यूल, ये सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए नोड पे, and they gave one getting the point।
और सो वी कॉल्ड इट कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का वी आर रनिंग इन नाउ सेपरेट एनवायरनमेंट। ओके, अब इंजन को हम लोग सेपरेट एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं। ओके, विद मॉडिफिकेशन। तो अब क्या हो गया, इसका नाम node.js हो गया। सो गॉट द पॉइंट व्हाट इज node.js नाउ एंड वेयर वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस node.js and how we got the node.js. Anyone any query about this? अब जो है जावास्क्रिप्ट हमारे पास यहाँ पर आ गई और हम लोग अब बैकएंड में एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहां पर एज अ सर्वर है। ओके, node.js। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज asynchronous प्रोग्रामिंग एंड यू नीड अ सेपरेट माइंडसेट फॉर दैट। अभी तक जो तुम लोगों ने जावा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज और व्हाटएवर लैंग्वेज यू हैव यूज्ड फॉर द प्रोग्रामिंग, उसमें जो कुछ भी किया है उसमें मीन्स व्हेन ऐसे जो कुछ भी किया है मेथड्स आर सिमिलर बट द पॉइंट इज ओवर हियर द वे यू रोट द कोड वो चेंज हो जाएगा। द वे यू जो जिस तरीके से तुम लॉजिक बिल्ड करते थे, लूप के थ्रू थिंक करते थे, इस प्रॉब्लम को हम लूप से सॉल्व कर लेंगे, विल कॉल द फंक्शंस फॉर दिस वन, दैट फ्लो विल चेंज नाउ। क्योंकि नोड.जेएस फीचर्स इज, नोड.जेएस बहुत स्लो है। फर्स्ट थिंग, जावास्क्रिप्ट ही है जो तुम बैकएंड में रन करो विद डिफरेंट एनवायरनमेंट, so node.js is a separate environment that you are executing in the backend. Okay, a lot of people call it a separate language, but it's a separate environment. It's up to you what you call it. Okay, now अब ये बैकएंड में एग्जीक्यूट हो रहा है तुम्हारा एंड वी गॉट दिस। ओके, बट इट इज स्टिल स्लो, लॉट इट इज वेरी स्लो। तो फिर क्या हो इसका, लेकिन इसके पास असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का फीचर है, तो अभी हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। दैट यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन दैट पार्ट। ओके, that is the very important feature of this language and that is the only feature because that's why node.js is famous. उसी की वजह से node.js सबसे ज्यादा फेमस। ओके, so we got the idea over here कि node.js और python यहाँ पर जो है कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो node.js पर्पस क्या होता है, मोस्टली सर्वर। लेकिन अगर तुम्हें सीपीयू इंटेंसिव टास्क रन करने, दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू द सिंपली सीपीयू पर प्रोसेस हो रहा है डेटा, दैट इज नॉट टेकिंग डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क से फाइल हैंडलिंग नहीं कर रहे हो या नेटवर्क से डेटा नहीं रीड कर रहे हो, मीन्स मोस्टली मैथमेटिकल काइंड ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, दैट काइंड ऑफ उस पर्पस के लिए node.js इज नॉट गुड बट अदरवाइज node.js इज वेरी गुड। ओके, इट इज स्लो बट स्टिल बिकॉज ऑफ asynchronous प्रोग्रामिंग इट इज गुड, so we'll see that why it is good. Okay, so we got the idea। तो इसलिए हम लोग node.js लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ने वाले पूरी लैंग्वेज, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द जावास्क्रिप्ट, हम लोगों को ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पता है। so node.js इज अगेन द जावास्क्रिप्ट, इट जस्ट फॉर द बैकएंड। तो हम लोग सब कुछ सेम रहेगा। तो हम लोग ये देखेंगे एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक हम लोग क्या क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं बैकएंड में। ठीक है, रिमेंबर डॉम नहीं अवेलेबल है। so now I'll mention directly over here node.js is for what, for PCs. Okay, okay, not for browser. Okay, and runs on Chrome browser, you know Chrome browser, उसका जो Chrome browser का जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, Chrome V8 is the name of the engine. Okay, जावास्क्रिप्ट इंजन उस पर एग्जीक्यूट करते हैं, उसको सेपरेटली रन कर रहा है। ठीक है, एंड सो नाउ that okay, not in browser। Okay, this is not for browser, not for browser, that's why we don't have what, we don't have DOM over here, document object model is not available or any browser related function। okay, browser or UI related function, एक भी UI related और browser related function नहीं मिलने वाले तुम्हें यहाँ पर। okay, clear? so we got this over here, we got the idea what is this language and okay, तो दैट्स वाई, क्योंकि अब बैकएंड में रन कर रहे हो तो तुम्हें अब इसका मॉडिफाइड इंजन चाहिए था, तो इसीलिए तुमने node.js डाउनलोड करके इंस्टॉल किया। एंड लुक एट द वेबसाइट, अभी हम लोग वेबसाइट चेक करते हैं।
read it over here. Is a JavaScript runtime built on Chrome V8 JavaScript engine. उन्होंने भी ये बोला है, clear? It's a JavaScript runtime. Just Chrome V8 engine पर बना हुआ है for the back. Okay, first let me take the screenshot of this page. Okay. So you can see this over here. So now we got this is JavaScript again. तो हम लोगों को अब ये नहीं देखना है कि what is array, how to run the for loop, what is functions, okay, all those things. So all the things are same over here. लेकिन रिमेंबर jQuery वर्क नहीं करेगा क्योंकि jQuery किस लिए पर्पस क्या लाइब्रेरी का है, डॉम मैनिपुलेशन. डॉम किस में होता है, ब्राउजर में. तो बैकएंड में तो आने वाला नहीं है. बैकएंड में ना HTML CSS कुछ भी नहीं आएगा. सो रिमेंबर ऑल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द HTML CSS ब्राउजर में UI के लिए, वो कुछ भी नहीं मिलने वाला है बैकएंड. इट्स नॉट प्योर लैंग्वेज. ओके, so we got the idea over here. nodejs हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है and we already tested the nodejs. नोड का -v से हम लोगों ने टेस्ट किया. आई एम रनिंग 16.15.1 वर्जन ओवर हियर. हम लोग अब देखते हैं ऊपर ये. तो हाउ टू राइट द प्रोग्राम. अब हम लोगों को जब बैकएंड के लिए लिखना है तो HTML फाइल्स तो नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि दैट इज फॉर द ब्राउजर. तो हाउ टू, ओके, so create a file यहाँ पर. okay, create a file and okay, with extension java.js. okay, .js and write code in it. and इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, execute by command node space file name. ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करना है बाय द कमांड नोड स्पेस फाइल नेम. इससे इस कमांड से एग्जीक्यूट करना है. तो लेट्स चेक. हम लोग अपना पहला कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लोज द टर्मिनल. हम लोग जाते हैं यहाँ पर अपना पहला कोड लिखते हैं. ओके, लेट्स से फर्स्ट node.js डॉट JS फाइल एक्सटेंशन होना चाहिए, तो हम लोगों ने इसे लिख दिया. ठीक है, एंड आई क्लोज द HTML क्योंकि अब हम लोग फ्रंट एंड स्विच कर रहे हैं, बैक एंड पर मूव कर रहे हैं. हम लोग पहला यहाँ पर अगर console.log यूज करोगे तो दैट इज प्रिंटिंग ऑन द टर्मिनल. ओके, document dot write नहीं होगा because document dot write uses document, that is for the page. ओके, तो DOM तो है नहीं तो वो सब नहीं होगा, बट कंसोल इज प्रिंटिंग ऑन द टर्मिनल. ओके, so let's say okay, hi set. हम लोगों ने पहला एक सिंगल लाइन लिखा, that will print the data on the terminal. So how to execute it? I'll open the terminal और whatever prompt you are getting, just make sure जो तुम कोड रन कर रहे हो वो सेम फोल्डर में हो. तो मेरा कहाँ पर है, आई एम इनसाइड कोड फोल्डर, मेरा कोड भी सेम फोल्डर में है. ओके, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू मेक दिस मिस्टेक. तुम कोड किसी और फाइल में रखोगे, एग्जीक्यूट किसी और प्रॉम्प्ट पे करोगे. ओके, तो मेक श्योर तुम्हारा प्रॉम्प्ट जो है वहीं पर होना चाहिए. लाइक यू आर यूजिंग विंडोज बट प्रॉम्प्ट में पाथ विंडोज में भी लिख कर आता है. ठीक है, इट जस्ट स्लैश अपोजिट होंगे. तो ठीक है, तो आई एम इनसाइड कोड फोल्डर, डेट टू कोड फोल्डर. तो मेरा फाइल भी डेट कोड फोल्डर, तो डायरेक्टली आई कैन एक्जीक्यूट ओवर हियर. ओके, नोड स्पेस फाइल नेम क्या है मेरा, फर्स्ट nodejs.js. ओके, तो फाइल नेम टाइप किया, एंटर. वी गॉट द हैश सेट. हम लोगों का फर्स्ट प्रोग्राम डन. So everyone got the idea how to create the file and execute code. इसमें किसी को कोई query? Clear? Okay, Susan. I'll close this terminal.
over here. Okay, so now here you have to create a file. ठीक है, .js extension होना चाहिए and you can write any name to the file, but .js extension उसमें console.log से हम लोग print करेंगे. ठीक है, we don't have document.write, यहाँ पर document DOM है नहीं तो इसलिए document.write नहीं यूज होगा, सिर्फ console.log यूज होगा to print on the terminal. You are not printing on the page now. और इसके लिए एक टर्मिनल ओपन करना है. You can go to the terminal and you can click on the new terminal. You'll get the terminal. But make sure don't create hundreds of terminal over here. ठीक है, इसलिए पुराना टर्मिनल क्लोज कर दो and you work in that single terminal. Okay. तो इसीलिए you can use the control backtick as a shortcut. The shortcut to open the terminal is okay. Shortcut for terminal is, क्योंकि बार बार नया टर्मिनल ओपन करोगे so you will be opening lot of terminals over there. Okay, so don't do that. Backtick. Okay, this is the shortcut. इसी से toggle होगा. Okay, if you click on this it will open the terminal. Again if you press this button it will hide the terminal. Okay, like this. अगर तुम वहां पर जाओगे ऊपर, जैसे मैं गया ऊपर से नया टर्मिनल क्रिएट किया, so what it will do, it will open two terminals. तो मेरे पास लेफ्ट साइड में देखो दो टर्मिनल हो गए. You will be getting CMD और PowerShell over there. I am getting bash. ठीक है, अभी तो that I got multiple terminals, so I can work in both of them. So इसलिए मैं एक डिलीट कर दे रहा हूँ. I don't want multiple terminal. Okay, I'm going to work in the single. Okay, clear this part. So remember terminals याद रखना because now we are going to work on terminal. Okay. तो एंड फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करना है, नोड स्पेस फाइल नेम .js. रिमेंबर दिस. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर भी कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, पाथ याद रखना कि उसी फाइल उसी फोल्डर में ये कमांड रन करो जिस फोल्डर में फाइल है. ऐसा नहीं कि तुम जो है यू आर रनिंग दिस आउटसाइड. अगर तुम इसे आउटसाइड रन करते हो, आई विल शो यू एक्चुअली. आई विल गो आउटसाइड और यहाँ पर मैं रन करता हूँ. ठीक है, या हेलो सर, टर्मिनल पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, स्टिल सेम है जैसे पहला था. वेट इसके बाद एक्सप्लेन करता ना. तो अगर मैं बाहर जाता हूँ कोड के और हियर इफ आई ट्राई टू रन ओके दैट कमांड, फाइल तो यहाँ है ही नहीं ना. तो फाइल का अगर नहीं होगा तो एरर क्या आएगा, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल. रीड द एरर, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल. जो पाथ मैंने लिखा है फाइल नेम, अगर फाइल नेम को दे रहा है डायरेक्टली कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, इट मींस यू आर एट द रॉन्ग पाथ और स्पेलिंग मिस्टेक इन द फाइल नेम. तो इसलिए करेक्ट पाथ चेक करो, तुम हमेशा करेक्ट पाथ पर रहो. ठीक है, तो आई एम इनसाइड कोड फोल्डर फाइल, क्योंकि मेरी यहाँ पर है, तो आई शुड एग्जीक्यूट द फाइल ओवर हियर. ओके, तो लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू मेक दिस मिस्टेक, बट मेक श्योर अपना पाथ जरूर चेक करना. ओके, यस सोनल, कैन यू शेयर योर स्क्रीन नाउ? यस, टर्मिनल ओपन करो. यहाँ नहीं, ये टर्मिनल नहीं, इसको क्लोज करो. नोटजेस का VS कोड को ओपन करो. VS कोड में ऊपर है ना टर्मिनल पैनल, ठीक है, मेन्यू बार में. तो VS कोड तो ओपन है. हाँ, VS कोड के अंदर खुद का टर्मिनल. प्रेस कंट्रोल बैकटिक और कंट्रोल बैकटिक कंट्रोल डू वन थिंग. अच्छा एक काम करो, नोटजेस फोल्डर के अंदर है ना तुम्हारी फाइल, करेक्ट? यस सर, ये राइट क्लिक ऑन द नोटजेस. हाँ, ओवर ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल. ओके, ठीक है, बार बार नहीं करना है ये. ठीक है, अब नाउ रन द कोड. नोड स्पेस फाइल नेम क्या है? फाइल नेम ये फर्स्ट डॉट फर्स्ट, तो फाइल नेम टाइप करो. .js. यस, टाइप इंटर. एक काम करो, अगर किसी को ये एरर आता है देन फर्स्ट डिलीट द टर्मिनल. डिलीट बटन आ रहा है राइट साइड में. यस सर. यस, क्लिक ऑन दैट. क्लोज द VS कोड. ओके, ठीक है, अगेन दोबारा VS कोड ओपन करो. अगेन ओपन टर्मिनल ऑन दैट.
नाउ रन द कमांड, सेम कमांड। Node.js पूरा मेंशन करूँ सर? फाइल नेम हाँ मेंशन करो, नोड स्पेस फाइल नेम, नोड स्पेस फाइल नेम, फाइल नेम गलत है। इंटर Done. वर्किंग। Yes. तो हाँ, तो वेट वेट, अब जो है इसे कंट्रोल बैक टिक से टॉगल करो, कंट्रोल बैक टिक प्रेस करो, कंट्रोल बैक टिक एस्केप की के नीचे होगी बटन। Yes sir. हाँ, Done. दोबारा प्रेस करो। Yes sir. Got it. तो गॉट आइडिया, बार बार नया टर्मिनल ओपन करने की जरूरत है, बिकॉज इफ यू राइट क्लिक ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल इट विल ओपन मल्टीपल टर्मिनल्स। ओके, Okay. तो उसे तुम्हें सबको डिलीट करना पड़ेगा, तो ओपन वन एंड वर्क इन दैट। जब भी अगर फोल्डर सेपरेट करो तो ऐसे नया टर्मिनल तब ओपन कर लेना, ठीक है? Okay sir. ओके फाइन। तो गॉट द आइडिया हाउ टू एग्जीक्यूट बैक टिक, जो इसके की के नीचे होता है नया, क्लियर? टैब की के ऊपर वाले में। So now we are able to we executed our first code. Hello sir. Yeah, hello. मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ share. Yes, increase. Okay. So now हाँ हाँ बोलो। यहाँ पे फाइल का नेम देना है ना? हाँ बट तुम्हारी फाइल कहाँ पर है? node.js फोल्डर के अंदर है, करेक्ट? एंड रीड द प्रॉम्प्ट। हाँ, प्रॉम्प्ट का पाथ देखो, तो वहां से मत ओपन करो, डायरेक्टली गो टू द node.js फाइल पर जाओ, अपने राइट क्लिक करो, लेफ्ट साइड में पैनल में फाइल पर जाओ, लेफ्ट पैनल में फाइल दे रहा है ना jQuery फोल्डर node.js, डायरेक्टली फोल्ड फाइल, राइट क्लिक ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ठीक है, पुराना टर्मिनल डिलीट कर दो, राइट साइड में जाओ, राइट साइड में डबल पावर सेल लिख कर आ रहा है, राइट साइड ऊपर वाला पावर सेल डिलीट कर दो। ना इसमें अब देखो तुम्हारा पाथ करेक्ट, इसको नहीं डिलीट करना था, अगेन ओपन इट, राइट क्लिक करो उसी पर, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ठीक है, अब देखो पाथ लिख कर आ रहा है ना करेक्ट, node.js तक। अब यहाँ पर फाइल नेम लिखो, नोड स्पेस फर्स्ट अंडरस्कोर node.js, नोड स्पेस फाइल नेम। अगेन डिलीट द टर्मिनल, ओके डिलीट, वो होगा ना राइट साइड में बटन है ना टर्मिनल डिलीट करने की, फर्स्ट राइट साइड में ऊपर। हाँ, वीएस कोड क्लोज करो, दोबारा ओपन करो वीएस कोड। इसलिए मैंने डिलीट करने के लिए टर्मिनल बोला, बिकॉज टर्मिनल अपना सेशन स्टोर करके रखता है वीएस कोड में, तो इसलिए मैंने बोला था इंस्टॉलेशन के पहले वीएस कोड मस्ट क्लोज वीएस कोड। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं ओपन करोगे तो इसके टर्मिनल में जो है वो नहीं शो करेगा नोड। नाउ अगेन ओपन द टर्मिनल, इट विल वर्क फाइन, वर्क करेगा वो। फाइल नेम लिखो अपना, फाइल नेम क्लियर। तो एवरी टाइम यू डोंट हैव टू राइट क्लिक एंड ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, क्योंकि जब फोल्डर चेंज करो तभी करना, ठीक है? अदरवाइज सेम टर्मिनल को कंट्रोल बैक टिक से टॉगल करके यूज कर सकते हो। ओके, यस सोनल, बट टिल्डा साइन शिफ्ट के साथ आता है तो इसलिए बैक टिक होगा। क्लियर।
सर वो मैं नैन को बता दीजिए। अच्छा ओके, आई थॉट so fine. We got the first code, how to execute it, we got the point. Let's go for next code. ठीक है, हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेटर लिखते हैं, ठीक है, and I'm going to write a function over here. Eight plus 3 and here we got that add that is sub. मैं सभी कैलकुलेटर के लिए नहीं बना रहा हूँ, जस्ट 2 ऑपरेशन डन. Now let's call these functions. हम लोग कॉल करते हैं equal to so let's run this code and let's check. तो सेम टर्मिनल पर मैं दोबारा रन कर रहा हूँ नया फाइल calculator.js and we got the output 30 and 100. तो इस तरीके से जो हम लोगों ने सेम जावास्क्रिप्ट कोड पढ़ा सब कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एंड इफ वी वांट टू प्रिंट, हम लोगों को ऐसे प्रिंट करना है यहाँ पर. एंड यूजर इनपुट अभी आज हम लोग नहीं देखेंगे बिकॉज यूजर इनपुट इज नॉट दैट सिंपल ओवर हियर. ओके, so we got the idea how to create it. So our first topic over here is in the nodejs, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहा है. ओके, तो हम लोग नोट यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक देखेंगे हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल्स. ठीक है, हम लोगों का एक फर्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पर हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल्स. So modules means create a separate file. Okay. Separate file for some functionality. Okay. For some functionality. Okay, implementation. Functionality implementation. Anyone any idea what is module? Modularity तो idea होगा ना, what is modularity? व्यूअर तुम लोगों ने सी देखा है, जावा देखा है, okay. काफी टाइम से जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, इट मींस ये टर्म तो बार बार आया होगा. सो व्हाट इज मॉड्यूलरिटी इन प्रोग्रामिंग? What is modular programming or modularity in programming? There are multiple types of some, or you call it sometimes packages. Okay. Anyone any idea? Can be broken in parts. Yes. A unit that forms part of something bigger. Yes. Yeah, what we contain in that unit, or what we result, what we do in that part. Okay, packages, yes, kind of. Yes, so now several parts of the application. What do we have in that part? What we do in that part actually? Several parts, but in single part, what हम लोग क्या रखते हैं? Login, yes, kind of. Yes, include some functions and variables. Correct. तो मॉड्यूल इस बेसिस पे क्रिएट करते हैं, मींस लाइक जो भी हमारे सिमिलर फंक्शनैलिटीज हैं उसको हम लोग एक फाइल में लिख देते हैं एंड अदर सिमिलर फंक्शनैलिटीज इन अदर फाइल्स. तो जो भी सिंगुलर ऑपरेशंस हैं वो एक फाइल में, एक जगह पर रखते हैं, एक मॉड्यूल में रखते हैं. ओके, इट कैन बी ऑफ मल्टीपल फाइल, बट यस वी कीप दैट इन द सिंगल फाइल. ओके, ये पार्ट तो क्लियर है.
so that is module. So यहाँ पर भी सेम मॉड्यूल का पर्पस वही है, लाइक अदर लैंग्वेज दे हैव ओके, सभी में नेम डिफरेंट हो सकते हैं बट आइडिया ये सभी में होता है कि वी शुड राइट मॉड्यूलर कोड. ओके, so we create a separate file for some functionalities. Okay, then over here how to then the point is then export variables and functions from that file and import in the main file. Import in the main file. So for that import operation, the syntax is over here. We got a variable name. तो हम लोग variable name से import करते हैं यहाँ पर. Okay. And require we pass the path. Remember Linux path pass होगा. Even if you are using Windows, तो भी Linux का relative path use करना है वहाँ पर. Okay. So require. ऐसा नहीं विंडोज में अपोजिट स्लैश लगता है, सो यू कैन यूज दैट. यूज द लिनक्स. लिनक्स में जो पाथ में स्लैश यूज होता है दैट यू हैव टू यूज. ओके, जो तुम लोगों ने WSL पे में भी ट्राई किया. ठीक है, तो दैट इज दैट स्लैश इज यूज्ड ऑन विंडोज. लिनक्स में अपोजिट स्लैश यूज होता है. ओके ओके दत्तात्रेय. तो पाथ मॉडल तो ऊपर है हम लोगों को रिक्वायर से इंपोर्ट हो जाएगी. इसे पाथ देंगे और वो इस वेरिएबल के नाम से एक्सेस हो जाएगा. ठीक, देन वी कैन एक्सेस बाय दैट वेरिएबल डॉट फंक्शन और ओके वेरिएबल डॉट फंक्शन से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं और वेरिएबल डॉट वेरिएबल. ओके, जो भी उसका वेरिएबल है. So like this we can use that. जो भी उस मॉड्यूल से फंक्शन आ रहा है या वेरिएबल आ रहा है we can use it like this. ये तो इंपोर्ट का तरीका. लेट्स टॉक अबाउट नाउ एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं मेरे पास, 1 and 2. You can use export dot syntax. Okay, export dot function or export dot variable. Okay, now question when to use this syntax. Okay, use this syntax, okay, for functions and variable export. Okay, export and use if you got and use if you want to export lot of functions and variable, and use this if you want to export lot of okay many functions and variables. And then other syntax is module dot export. Okay, ऐसा नहीं कि इसको दोनों नहीं यूज कर सकते. एक्सपोर्ट की जगह मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट नहीं यूज कर सकते. वी कैन यूज इट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ऑल्सो फॉर द फंक्शन. इसको भी यूज कर सकते बट ओके डोंट यूज इट. मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू ओके वेरिएबल. तो प्रिफर दिस फॉर ऑब्जेक्ट. हम लोग फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं बट प्रिफर इज दिस फॉर ऑब्जेक्ट. एंड ओके prefer if you are exporting one object from the file. Okay, prefer if you are exporting one object from the file. Okay, exporting one variable from the file. Clear this part? Anyone any query about this? So let's try. हम लोग मॉड्यूल क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो I'll create a separate folder. हम लोग nodejs के लिए सेपरेट फोल्डर बना देते हैं and we'll be writing all our code inside that. हम लोग एक मेन फाइल बनाते हैं इसमें main.js एंड ये मेरी मेन फाइल होगी. एंड लेट्स क्रिएट अ मॉड्यूल. एक calc.js मॉड्यूल बना लेते हैं. ठीक है, calc.js में हम लोग कैलकुलेटर के फंक्शन लिखेंगे. main.js में हम उनको यूज करेंगे. ओके, तो लेट्स ट्राई. तो पहले हम लोग कैल्क में जाते हैं और फंक्शन लिखते हैं. एंड फॉर द फंक्शन अभी मैंने जस्ट एक सिंटैक्स बताया, एक्सपोर्ट डॉट फंक्शन यूज करना है. तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज द एनोनिमस फंक्शन सिंटैक्स. ठीक है, इसलिए हम लोग एनोनिमस फंक्शन सिंटैक्स यूज करेंगे. तो फर्स्ट आई विल टेल यू हाउ टू राइट एनोनिमस फंक्शन. तो अगर हम लोग
तो हम लोगों ने रिटर्न ए प्लस बी लिखा, रिटर्न ए माइनस बी लिखा, करेक्ट। Now over here we got the sum and sub function. ये तो anonymous, इस सिंटैक्स में फंक्शन के सिंटैक्स में किसी को कोई क्वेरी? नो सर। इसी फंक्शन को अगर मुझे एक्सपोर्ट करना होता है देन हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्सपोर्ट डॉट, इसको भी जिसको एक्सपोर्ट करना है विच एवर फंक्शन यू वांट टू एक्सेस आउटसाइड, उसको ऐसे एक्सपोर्ट कर दो। दैट्स इट, हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। लेट्स गो टू द मेन फाइल एंड यूज इट। कर दिया, मेन फाइल पर आते हैं अपने, और यहाँ पर पहले तो उसे इंपोर्ट करना है। तो लेट्स से आई एम इंपोर्टिंग इट बाय द सी नेम। राइट नाउ आई एम यूजिंग अ नॉर्मल नेम, ओके, एज अल्फाबेटिकल नेम, बट लेटर आई विल बी यूजिंग द सेम नेम, ठीक है। तो इसलिए अभी पहली बार है, तो जस्ट टू शो यू द डिफरेंसेस। रिक्वायर के अंदर डॉट स्लैश सेम लोकेशन पर फाइल है calc.js, ओके। तो विंडोज में भी हो तो भी तुम ये स्लैश नहीं यूज करोगे, बिकॉज ऑफ द विंडोज यूज दिस स्लैश, ओके, इवन इन विंडोज आल्सो, ओके। क्लियर दिस पार्ट? तो डॉट स्लैश कैल्क वी गॉट ओवर हियर। तो हम लोगों ने जो है उस मॉड्यूल को, देयर नो नीड, यू कैन राइट द डॉट जेएस, ओके, दैट इज आल्सो फाइन। इफ यू आर नॉट राइटिंग दैट इज आल्सो फाइन, ओके, नो नीड टू मेंशन दैट। हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। लेट्स कॉल द ओवर हियर सी डॉट एड फंक्शन, उसको मैं 10,20 और पास कर देता हूँ। लेट्स प्रिंट द कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। Let's call another function. हम लोगों का ये पार्ट हो गया। लेट्स ओपन द बैक टर्मिनल। और हम लोगों को एक्सिक्यूट कौन सी पहली फाइल करना है, जिसमें जो मेन फाइल है। तो एक्चुअली कोड हम लोगों का दूसरे फोल्डर में, तो आई विल गो इनसाइड दैट फोल्डर। माय मिस्टेक, कमांड गलत है। cd nodejs, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। यू कैन राइट क्लिक एंड, क्योंकि फोल्डर चेंज किया तो तुम राइट क्लिक ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू नो दैट, अदरवाइज cd से भी स्विच कर सकते हो, ठीक है। एंड देन टाइप द node स्पेस main.js and it says that c.add is not the function. I think मेरे फंक्शन का नाम सब है क्या, सम है। रीड द एरर, पहले एरर देखते कैसे रीड करना है। रीड द एरर, टाइप एरर में क्या लिखा हुआ है? इट इज टेलिंग अस कि c.add पर एरर है, and the error is c.add is not the function. It means there is a problem with the function name. हम लोग फंक्शन नेम चेक करते हैं एंड द फंक्शन नेम इज सब, तो हम लोग सम चेंज कर देते हैं यहाँ पर फंक्शन। हम लोग रन करते हैं एंड यू कैन सी वी गॉट द आउटपुट। तो ये पार्ट क्लियर हुआ, हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल। तो ट्राई दिस कोड, डोंट टेक लॉट ऑफ टाइम। तुम लोग ऐसे, यस हेलो सर, रन नहीं हो रहा है सर मेरी कमांड नहीं रन हो रहा। व्हाट इज द इशू? स्क्रीन शेयर शेयर करो। योर स्क्रीन शेयर करो। बैक ओपन करो टर्मिनल। फोल्डर कहाँ पर है तुम्हारी फाइल, किसमें है? jQuery underscore effect dot html इज द फोल्डर नेम, उसके अंदर है। हाँ, ठीक है, और तुम्हारा प्रॉम्प्ट में फोल्डर कौन सा दे रहा है? प्रॉम्प्ट का फोल्डर देखो, प्रॉम्प्ट में जो आ रहा है, टर्मिनल के प्रॉम्प्ट में, टर्मिनल देखो, वहाँ नहीं, टर्मिनल खुला है ना नीचे, प्रॉम्प्ट में फोल्डर क्या लिखा हुआ है? WPT वर्क। तो फाइल वहाँ तो है नहीं, करेक्ट। फाइल तो एक और नेस्टेड फोल्डर उसके अंदर है। तो राइट क्लिक करो उस फोल्डर पे जहाँ पर फाइल है, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। अब करेक्ट बात आया, ठीक है। नाउ रन ऑन दिस।
तो ये नहीं हो रहा। होगा, क्यों नहीं होगा? नोड स्पेस फाइल नेम लिखो। सारा है। हाँ, डिलीट करो टर्मिनल, द प्रॉब्लम इज आई गॉट द पॉइंट। ये भी टर्मिनल डिलीट करो, VS कोड क्लोज करो, दोबारा VS कोड ओपन करो। जिनके साथ ये इशू आ रहा है दे कैन डिलीट द टर्मिनल, सारे टर्मिनल डिलीट करो, VS कोड ओपन करो, दोबारा इंस्टॉल क्यों कर रहा है? दैट इज द सेटअप। उसको इंस्टॉलेशन में मत जाओ, कैंसिल इट्स द इंस्टॉलेशन, कैंसिल लेट इट इंस्टॉल। हो जाएगा। सेटअप रखा है वो, दैट इज द सेटअप। तुम्हारा VS कोड नीचे सर्च किया करो स्टार्ट से और आइकॉन से ओपन किया करो। ओके, डोंट इंस्टॉल now over here close this VS code। ओके, पहले से ओपन क्लोज करो, क्लोज करो VS कोड, VS कोड को क्लोज कर दो पूरा। हाँ क्लोज करो, अगेन ओपन द VS कोड। नहीं वहां से नहीं, वो सेटअप है, क्लोज करो उसे, सेटअप नहीं, कैंसिल करो इसे। बार बार इंस्टॉल क्यों कर रहे हो? ओके, गो टू द स्टार्ट बटन, सर्च करो VS कोड, यहाँ पर कोड लिखो, इंस्टॉल हो चुका है, यहीं पर होगा, वो है ना ऐप, ओपन करो, ठीक है। डोंट इंस्टॉल एवरी टाइम। ओके, नाउ ओपन दैट, राइट क्लिक करो jQuery effect डॉट HTML उस फोल्डर पर, टर्मिनल पहले से आ रहा है, गो टू राइट क्लिक एंड उस पर जो है तुम इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन करो एंड टाइप द नोड, फाइल नेम, .js नको टाकू, फक्त फाइल नेम टाक। .js लिखो आगे। .js कैसे सर? हाँ वो नहीं है क्या ना .js? हाँ, there अंडरस्कोर अंडरस्कोर फर्स्ट की स्पेलिंग सही है, नोट कोई कंपलसरी नहीं है, .js इट्स नॉट कंपल्सन। लिख रहे हो तो भी सही, नहीं लिख रहे हो तो भी, फाइल नेम तो सही है। तुमने नोट.js इंस्टॉल किया तुषार? क्या सर? नोट.js इंस्टॉल किया है तुषार तुमने? हाँ किया है सर। उससे स्टार्ट बटन पर क्लिक करो एंड टाइप नोड, हाँ टाइप नोड, ओपन करो इसे। और इसका पाथ अलग ही दिख रहा है .html jQuery से। हाँ नहीं, उसने फोल्डर का नाम ही .html रखा है, दैट्स फाइन। हाँ उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, बट नोट.js ओपन तो क्लोज करना नोट.js। क्लोज करूँ सर? हाँ हाँ क्लोज कर दो, और डू वेट, VS कोड को ओपन क्लोज मत करो, VS कोड में डू वन थिंग, यहाँ पर जो नंबर 2 लिखा हुआ है राइट साइड से देखो, MCUICNT करके समथिंग, एरो की पर क्लिक करो, यस यस क्लिक करो एंड यूज द पावर सेल, यस नाउ। अच्छा इसमें ये, डोंट क्लिक ऑन दैट, राइट क्लिक वहां ना करो, फोल्डर पर क्लिक करो, jQuery effect डॉट HTML पर राइट क्लिक करो एंड राइट क्लिक, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, टाइप नोड स्पेस -v, जस्ट टाइप नोड स्पेस -v, हाइपन -v स्पेस -v स्पेस -v -v, yes। एक मिनट, डिलीट करो, आई थिंक इट्स अ टर्मिनल प्रॉब्लम, डिलीट करो, सारे टर्मिनल डिलीट करो, वहां से नहीं, डिलीट बटन है ना उसके पहले डिलीट आइकॉन पे क्लिक करो, यस ये क्लिक, सर। एक डिलीट हुआ, दूसरा भी डिलीट करो, तीसरा भी डिलीट करो, VS कोड क्लोज करो, दोबारा ओपन करो, इट विल वर्क फाइन, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, दोबारा ओपन करो VS कोड, यस आई ट्रस्ट द ऑथर।
ये अब क्लिक करो, राइट क्लिक इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन करो। नाउ टाइप नोड स्पेस फाइल नेम, वर्क करेगा। फाइल नेम जो तुम्हारा क्या रहता है? हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, CMD लिखो, CMD। हाँ, टाइप नोड स्पेस -v। वर्क कर रहा है। क्लोज दिस, पावर शेल ओपन करो, स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, पावर शेल लिखो। पावर शेल, ठीक है, ओपन करो। टाइप नोड स्पेस -v। एंटर, ठीक है, क्लोज कर दो पावर शेल, CMD विंडो भी क्लोज कर दो। गो टू दैट, जो पावर शेल लिखा है वहां पर राइट साइड में प्लस के पहले एरो की पर क्लिक करो, एरो की पर, एरो की, यस, और कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट कर लो वहां पर, ठीक है। एंड डू वन थिंग, तुम्हें CD के साथ जाना पड़ेगा, टाइप CD स्पेस फोल्डर नेम, jQuery underscore effect dot html is the folder name, so go to that folder and folder में एक्सटेंशन मत लिखा करो, ठीक है। नो, एंटर, एंटर करूँ सर? हाँ एंटर करो। cannot find this, वो फोल्डर क्या है तुम्हारा, jQuery underscore effect dot html, WPT का, अच्छा तब HTML वर्क भी है, CD स्पेस HTML वर्क, हाँ यस। उसके अंदर में है फोल्डर, है तो डायरेक्ट CD स्पेस HTML वर्क, उसके अंदर पहले जाओ। एंटर, नाउ टाइप CD स्पेस jQuery effect dot html, अब HTML वर्क के अंदर में, एंटर। नाउ अब रन करो नोड स्पेस फर्स्ट नोड डॉट, फर्स्ट के बाद स्पेस दिया तुमने फाइल में क्या? फाइल में नहीं ना। फाइल में अंडरस्कोर है ना? हाँ ठीक है, हाँ हाँ। अंडरस्कोर है, हाँ टाइप करो, टाइप कमांड वहीं पर टाइप करो, ठीक है। ये नीचे नहीं है तरफ, जगह नहीं है, याद दिख नहीं रहा। अच्छा, डू वन थिंग, प्रेस टाइप क्लियर, ठीक है, टाइप नोड स्पेस, नोड स्पेस, नोड, हाँ नोड स्पेस एंड फाइल, एंटर। चल रहा है, तो तुम पावर शेल जब भी रहेगा तो उसको तुम चेंज करके CMD कर लेना, और यू कैन मूव टू द फोल्डर बाय द CD, ओके। तो ये प्रॉब्लम तो आया सर। पावर शेल आई थिंक यू माइट हैव टू रीस्टार्ट द, ओके, सिस्टम तो पावर शेल पे ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, एक बार और रीस्टार्ट करने के बाद चेक कर लेना पावर शेल पे बाद में, ठीक है। वो उसको कैसे रिस्टार्ट करें सर? सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए, ओके, बट वो बाद में करना, अभी मत करो, अभी तो CMD है ना, ठीक है, तो CMD पे वर्क कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे, क्लियर। तो एनीवन एनी क्वेरी अबाउट दिस मॉड्यूलर कोड? So then let's move to the, okay,
लेट्स डू वन थिंग, तुम लोग पहले एक जो है छोटा सा खुद इम्प्लीमेंटेशन करो मॉड्यूलरिटी, देन आई ओके गो फॉर मोर कॉम्प्लेक्स वन. Create a calc module and implement function for addition, subtraction, multiplication, division, and use that in main file. Okay, use these functions in main file. So complete this and then we will move forward. ज़्यादा time मत लेना because it's a simple code and तुम्हें UI से ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो I think it should be faster now. So try to complete it. सर कोड दिखाए ना. Yes, I'll share the code. Wait. But मेरा code copy paste नहीं करना. Okay, I'll share the file. यस सर. Type करना खुद ही, ठीक है? Because I will get at least something by that typing. Okay. Because otherwise मेरे कोड में सिर्फ 2 फंक्शन ही ऐड करना, बट I'll say टाइपिंग खुद करना, ठीक है? मैंने सारी फाइल शेयर कर दिया, असाइनमेंट क्वेश्चन भी शेयर किया. कंप्लीट दैट देन आई विल मूव फॉरवर्ड. हेलो सर. ओपन. या हेलो, फाइल ओपन नहीं हो रहा. कैन यू शेयर योर स्क्रीन? सर वो आपने दिए ना कोड वाले फाइल, वो नहीं शेयर हो रही, ओपन नहीं हो रही. ओपन नहीं हो रही है? हाँ. सेव करो, उसके बाद वो नोटपैड से ओपन होगी, और नोटपैड प्लस प्लस यूज करो. ओके ओके. ओके, ओपन होगा. ओपन विद से ओपन करो, ठीक है? हेलो सर. या हेलो. हाँ सर, ये मेन फाइल ओपन करने का कि मतलब वो फंक्शन वाला फाइल रिजल्ट के लिए आउटपुट के लिए? मेन फाइल ओपन करने के बाद मतलब ये जो मेन डॉट जेएस है ना, हाँ हाँ, ये ओपन करता तो सर मतलब ये आता है कि सी डॉट एड इज नॉट अ फंक्शन,
ऐसा मतलब एरर आता है। हाँ मैंने आई थिंक आंसर आ कोड जाता है। चेंज किया है, मैंने सेम सम कर दिया ना कोड में, तो देन मैंने शेयर किया है। कैल कैल में भी वही है क्या सम? हाँ मैंने ओके सम रखा हुआ है, ये देखो सम है ना फंक्शन में। ठीक है सर। ओके सर। Okay. Okay, नीलेश। Anyone facing any issue in this question? सर यहाँ पे आर्गुमेंट कैसे पास हो रहे हैं? आर्गुमेंट ने ये पास किया है ना, लुक एट दिस 1020 अच्छा अच्छा। हार्ड कोडेड आर्गुमेंट पास किया है, तो रिसीव होगा ना, करेक्ट? सर यस चलो। सर ये काम अभी बैकएंड में शुरू है ना सर? हाँ हम लोग बैकएंड में अभी सर्वर भी नहीं क्रिएट करें, हम लोग पहले बेसिक देख रहे हैं, हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल, हाउ टू वर्क विद द फाइल्स, देन उसके बाद हम लोग सर्वर पर जाएंगे, ठीक है?
ओके तो सर ये चीजें जो है ये फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होगी? नहीं, फ्रंट एंड पे नहीं, अभी टर्मिनल पे डिस्प्ले हो रही है ना। अच्छा, वो सर्वर के यानी विद द हेल्प ऑफ सर्वर वी कैन डिस्प्ले ऑन फ्रंट एंड, ओके? हाँ, इज हम इट लोगों राइट को सर? सर्वर बनाना पड़ेगा तब होगा फ्रंट एंड। मैंने जब डायग्राम बनाया था तो मैंने बताया था बैकएंड लैंग्वेज में से जब सर्वर लिखेंगे देन दैट विल गिव द डेटा टू द फ्रंट एंड, करेक्ट? ओके सर। तो अभी तो सर्वर बना नहीं रहे हैं, अभी तो सिंपल ऐसे कोड लिख रहे हैं। पहले तो ये सब समझ में आना चाहिए ना, व्हाट इज मॉड्यूल, हाउ टू हैंडल फाइल्स एंड ऑल दीस थिंग्स, करेक्ट? यस सर। ओके। Hello, sir. Yeah, hello. I'm audible. Yes, yes, you are audible. कैलकुलेटर की जो फाइल है ना एक बार ओपन कीजिए कैलकुलेटर। हाँ हाँ, ओपन किया। नहीं नहीं, नीचे नीचे मेन के नीचे। ओके, दिस वन, ओके फाइन। हाँ ओके। हाँ, हियर इन दिस फाइल इसमें मॉड्यूल नहीं बनाया है, बाद में मैंने मॉड्यूल बनाया। ओके,
Okay, so let's move. Yes, Tushar. एरर आ रहा है सर, स्क्रीन शेयर करो सर। Okay, share. It says that read the error first. Error में क्या लिखा हुआ? अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। एंड एक लाइन बोल्ड में लिखी हुई व्हाइट कलर बोल्ड में, उसमें क्या लिखा हुआ है? main.js की किस लाइन में एरर? जो बोल्ड में है थोड़ा सा, ये वाला सर। हाँ हाँ, क्या लिखा हुआ है उसमें? main.js:1:9, करेक्ट? हाँ हाँ, इट मींस फर्स्ट लाइन में एरर है main.js पे। नाउ क्वेश्चन इज फर्स्ट लाइन में कौन स्क्रॉल अप सिंटैक्स एरर के पहले भी कुछ लिखा होगा। वो नीचे नहीं हो रहा है सर। हाँ यार, लिखा द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ। एक्चुअली calc.js कहाँ पर है? लोकेशन पर है, ./calc, स्पेलिंग भी सही है। फाइल तो तुम्हारा सही है। सही है सही है। वेट, तुमने main.js को कहाँ पर रखा है? ये jQuery.fx में ही है ना? यही वाला क्लिक कर रहे हो? यही सर, सॉरी। रन द कोड अगेन, कोड दोबारा रन करो। टर्मिनल ओपन है ना? ऑलरेडी टर्मिनल नीचे ओपन है। रन द कमांड डायरेक्टली ऊपर से देखो, फोल्डर बस देखो, अगर प्रॉम्प्ट सही पाथ पर होना चाहिए उसके बाद यू कैन डायरेक्टली रन द कमांड। ठीक है, नोड स्पेस फाइल main.js लिखो, एंटर। result a minus b, problem is there. Okay, check, show me the result a minus b, calc.js में error है। read the error, result a minus b में calc.js line number 5, करेक्ट? यही लिखा है ना सिंटैक्स एरर के ऊपर? एरर पढ़ो पहले, अनएक्सपेक्टेड। रिजल्ट किस फाइल में? वो calc.js ऊपर लिखा है, उसके ऊपर result a minus b के ऊपर लिखा हुआ नहीं, उसके नीचे ए रिजल्ट a minus b के ऊपर वाली लाइन में लिखा है ना calc.js, जहाँ रिजल्ट a minus b लिखा हुआ है एरर, ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है लास्ट में? किस फाइल में एरर है, किस लाइन में एरर है? फाइल, गो टू फाइल, गो टू calc.js, फिफ्थ लाइन, रिटर्न होगा ना वो तो करेक्ट। ठीक है ना, आया। तो सर ये पावर शेल का सिस्टम में जाके कैसा करना है वो बता दीजिए ना। पावर शेल का तुम्हें सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, मे भी शायद हो जाए, एक बार ट्राई करना, नहीं होता है देन बाद में देखते हैं। ठीक है, उसको कैसे करना है। ओके, बट मुझसे एक बार पूछ लेना, एक बार रिस्टार्ट करके लेकिन ट्राई करना, अभी नहीं, बाद में ट्राई करना। ठीक है, अभी रिस्टार्ट करोगे इट विल टेक फ्यू मिनट, बाद में करना। ओके, तो तब तक डिलीट कर सकते पावर शेल को लेफ्ट राइट साइड से। तो देन लेट्स फोकस ओवर हियर। हम लोगों ने ऑलरेडी मॉड्यूल्स देख लिया, हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल्स। ओके, so let's over here I'm going to give you one should I give you the question over here or not? Okay, let's create one more module first. Okay, then I'll go for this. So I'm creating another method. Okay, तो मैंने एक मेथड बताया, मैंने बताया था दो तरीके होते हैं इंपोर्ट करने के। So I told you there are two methods to import. One is the export dot function, ये हम लोगों ने देख लिया। Let's go for this one. जब ये यूज कर रहे हो, I told you prefer this for the object. तो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, let's say here I'm creating calc object. ठीक है, इसके अंदर हम लोग ऐसे भी तो फंक्शन बना सकते हैं।
आई थिंक मैंने पहले ये बताया था कि कैसे बना सकते हैं, करेक्ट? हम लोगों ने जो है यहाँ पर फंक्शन बना लिए, ठीक है। एक फंक्शन बना है ऑब्जेक्ट के अंदर, सिंस दिस इज ऑब्जेक्ट सो आई विल बी एक्सपोर्टिंग विद दिस सिंटैक्स। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है कैल को यहाँ से, सिंपल ना। अभी एक्सपोर्ट किया तो इस मॉड्यूल को भी मैं सेम ही मेन डॉट जेएस में इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये वाला पहले किया था, लेट्स अनदर मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब कैल्क अंडरस्कोर ओबीजे इंपोर्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद कॉलिंग मेथड नहीं चेंज होगा क्योंकि तुमने ऑब्जेक्ट कॉल किया है डायरेक्टली, यहाँ से ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम्हें सम और सब फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस हो रहे हैं। तो यू कैन डायरेक्टली कॉल इट लाइक सी डॉट सम, सी डॉट सब, ओके। तुम्हें ऐसा जो है यहाँ पर सिंटैक्स चेंज करने की नीड नहीं है। लेट्स चेक, अभी तो मैंने इंपोर्ट चेंज कर दिया, नाउ वी आर गेटिंग द फंक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। लेट्स चेक की वर्क कर रहा है, हाँ इट्स वर्किंग फाइन। क्लियर दिस पार्ट? लेट्स टॉक अबाउट नाउ फाइल हैंडलिंग, ओके। अभी असिंक्रोनस कोड हम लोग नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। सर वो ऑब्जेक्ट वाला कोड दिखाई नहीं। ओके जस्ट अ मिनट। हियर तो मतलब यहाँ पे एक ही वेरिएबल में ऑब्जेक्ट स्टोर किया और उसमें अलग अलग फंक्शन स्टोर कर रहे हैं। हम प्रॉपर्टी वैल्यू रख सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू होता है, करेक्ट? हाँ एंड आई सर। टोल्ड यू आई कैन हैव वैल्यू एनीथिंग, वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, नेस्टेड हाँ ऑब्जेक्ट सर। हो सकता है, एरे भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, तो वी असाइन द फंक्शन हो सकते हैं, ओके। ओके सर। जब हम लोग ये फ्रंट एंड में मैंने बताया होगा तो देयर आई टोल्ड यू कि उस समय मॉड्यूल वहां नहीं क्रिएट करते, बट हियर वी क्रिएट अ सेपरेट मॉड्यूल बाय दिस इन द नोडजेस, ओके। ओके सर। Okay, then let's move forward. And over here हम लोग फाइल हैंडलिंग देखते हैं, ठीक है। तो फॉर द फाइल हैंडलिंग हम लोगों को इनबिल्ट मॉड्यूल एफएस मॉड्यूल यूज करना है, ओके। तो फाइल हैंडलिंग फीचर के लिए यूज द मॉड्यूल एफएस, इट्स अ इनबिल्ट मॉड्यूल, ओके। इनबिल्ट मॉड्यूल होता है नोड.जेएस में, एफएस इज द मॉड्यूल नेम। तो अभी हम लोगों ने सीखा मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोग मॉड्यूल डिफाइन कर रहे थे, करेक्ट? इसलिए हम लोग पाथ दे रहे थे, बट इट्स अ इनबिल्ट मॉड्यूल। तो हम लोगों ने देखा है कैसे इंपोर्ट करना है, तो लेट्स इंपोर्ट द इनबिल्ट मॉड्यूल। मॉड्यूल नेम क्या है? एफएस। डायरेक्टली राइट द पाथ, ओके, डोंट राइट द पाथ, जस्ट राइट द नेम। एफएस इंपोर्ट हो जाएगा and we can express it by the f name, okay। Now we got the module over here, now we can move forward and we can talk about few functions over here।
अभी तो हम लोग ओके सिंक फंक्शन देखेंगे ऊपर हियर, इसके कल सिंक फंक्शन देखेंगे, ठीक है। सिंक फंक्शंस में आई विल बी यूजिंग लाइक fs डॉट, जो भी इसका फंक्शन है तो वो डॉट से एक्सेस होगा। सो लेट्स से रीड फाइल सिंक, डोंट यूज द रीड फाइल, वो असिंक्रोनस फंक्शन है, वो बाद में देखेंगे। राइट नाउ यूज द असिंक्रोनस फंक्शन, ओके। तो इसमें हम लोग फाइल नेम पास करते हैं, ओके। रिटर्न buffer, you can call it buffer type data or byte type data, okay, you can call it byte type data. So use, okay, so use the dot to string to convert to string. So string, then we got write file. It takes two arguments. First one is यहाँ पर कोई मोड या कुछ नहीं, डायरेक्टली राइट फाइल सिंक पास करना है, देन डेटा, ओके, जो भी राइट करना है, ओके। डेटा मस्ट बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, दैट इज द पॉइंट ओवर हियर, ओके। स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, एंड इफ फाइल इज ओके, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, if file is not there, it will create it. Create it. And if file is there, it will overwrite the data. Remember, okay? Then we got another is the append file thing. Simply over here we got the file name, and then second argument is the data, and append the data to the file. Done. So let's try, आज हम लोग को create function use करना है, so let's create the file. Okay, हम लोग f dot write file sync use करते हैं, write file नहीं use करना है, that is asynchronous function, ठीक है। हम लोग एक फाइल बनाते हैं demo.txt, अभी ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो एज आई टोल्ड यू, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्रिएट कर देगा। So I want to write the data over here, तो मैंने क्या लिखा है डेटा अपना, this is the file I am writing, और यहाँ पर मैंने डेटा आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक है। तो दिस विल क्रिएट द फाइल, लेट्स एक्सिक्यूट दिस कोड, और इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, बट हम लोग फाइल पे देख सकते हैं, ठीक है। नोड स्पेस, कोई आउटपुट नहीं आया है, इट मीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, एंड वी गॉट द demo.txt फाइल लेफ्ट, ओके। लुक एट द लेफ्ट पैनल, demo.txt फाइल में स्ट्रिंग आगे जो मैंने राइट किया है। तो ये पार्ट डेटा कैसे राइट करना है फाइल में, इट्स सिंपल। नाउ लेट्स अपेंड द डेटा टू द फाइल। हम लोग अगर राइट फाइल दोबारा कॉल करते हैं, एज आई टोल्ड यू कि राइट फाइल अगर दोबारा कॉल किया तो ये क्या करेगा, उस फाइल में डेटा ओवरराइट कर देगा। यस, तो लेट्स ट्राई। सर इसमें पाथ दे सकते हैं क्या demo.txt का? पार्स में आई एम नॉट गेट पार्स मींस व्हाट, फाइल का पाथ, मतलब अगर हमें दूसरे कैन गिव द पाथ, यस, ओके, अगेन राइटिंग द फाइल, ओके, सो यू कैन गिव द पाथ। तो मैंने दोबारा राइट फाइल सिंक से राइट कर रहे हैं, लेट्स चेक, नो एरर, लेट्स चेक द फाइल। देखो पुराना डेटा चला गया, नया डेटा है, सिर्फ अगेन राइटिंग द फाइल, इट मींस राइट फाइल सिंक इज ओवर राइटिंग द डेटा। लेट्स अपेंड द डेटा, तो हम लोग एक बार जाते हैं एंड ऊपर हियर लेट्स कॉल इट appending the data, I will call it, f dot append file sync, okay,
and over here I'll write the data again. Let's check. अपेंड कर दिया, उसके बाद पहले का जो डेटा उसके बाद आ रहा है अपेंडिंग द डेटा, करेक्ट? Look at this. Now if I want to read the data from this file, so for that I have to call the read file sync. And let's pass the demo.txt. तो इससे मुझे जो है पूरा एक डेटा मिल रहा होगा इस फाइल से, बट आई टोल्ड यू डेटा किस फॉर्मेट में होगा, रिटर्न बफर टाइप मींस बाइट फॉर्मेट होता है, ठीक है? आई विल शो यू कि कैसा डेटा दिखेगा। ठीक है, तो डेटा फाइल से यू कैन सी बफर फॉर्मेट में डेटा शो हो रहा है। तो इसी वजह से इसलिए हम लोग इसको चेंज कर देंगे तो स्ट्रिंग से स्ट्रिंग में, एंड देन इफ आई प्रिंट you'll get the string data last में। Clear this part? Anyone any query about this? How to read data from file, how to write data into the file, how to append data into the file. I think it's simple over here. Anyone any query? Okay, so let's create another file. So I'm going to create a separate file over here. Let's say fruit.txt. I'm going to write some data in this file. Okay. Let's say apple. It's the rate of that. Okay. Banana 30. 3 comma apple banana. Okay, let's say mango 40. ठीक है, तो इस फाइल में मैंने डेटा लिख दिया। नाउ आई वांट टू पार्स दिस डेटा, तो इसके लिए पहले तो हमें मॉड्यूल की जरूरत होती है। दिस टाइम आई एम डायरेक्टली राइटिंग द एफएस ओवर देयर। लेट्स डू द पार्सिंग ओवर हियर। तो हम लोगों को पहले क्या करना चाहिए, डेटा को रीड करना चाहिए। एफएस डॉट रीड फाइल सिंक से डेटा आएगा मेरे पास। किस टाइप का डेटा आएगा, बफर टाइप का, fruit.txt से ना। अगर बफर टाइप का आ रहा है तो उसको मैं डायरेक्टली यहीं पर लिखकर कन्वर्ट कर देता हूँ डायरेक्टली स्ट्रिंग में, ठीक है। डन। अब डेटा तो मेरा स्ट्रिंग में आ गया, लेकिन अभी डेटा को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। अब मुझे उसमें से रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे रेट चाहिए सारे अलग। ओके, आई वांट टू प्रिंट द फ्रूट नेम सेपरेटली। लेट्स लीव द रेट, मुझे फ्रूट नेम प्रिंट करना है सेपरेटली, ठीक है। उसमें से लाइन सही है। लाइन वन में क्या है,
We are getting the data. Line 1 is importing the fs module actually. ये read file sync to function fs module से आ रहा है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग के लिए तुम्हें मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। आई टोल्ड यू कि जो है नोड.जेएस जब तुम जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में लेके आ रहे हो, यू हैव टू ऐड सम फीचर, सो दे एडेड ऑल द फंक्शनैलिटीज थ्रू द मॉड्यूल। ओके, क्लियर? तो वी गॉट द ऊपर हियर डेटा आ गया हमारे पास, लेकिन अब मुझे इसमें से सिर्फ रूट नेम प्रिंट करना है। तो फॉर दैट आई फर्स्ट ओवर हियर हम लोगों को क्या करना चाहिए, डेटा डॉट स्प्लिट को स्प्लिट कर लेना चाहिए, बट सारा डेटा न्यू लाइन में है। तो पहले तो लाइन अलग करते हैं, ठीक है। तो आई से वेर स्प्लिट, तो पहले तो न्यू लाइन कैरेक्टर से स्प्लिट करो, देन यू विल गेट अ सेपरेट लाइन एक एरे के अंदर, ठीक है। लेट्स चेक कोड देखते हैं। यू कैन सी हमारे पास हर एक लाइन एरे के हर एक इंडेक्स पर आ गई। नाउ दिस इज गुड। ओके, हम लोग फॉर लूप लिख सकते हैं। हम लोगों के पास फॉर लूप है एंड वी कैन इटरेट थ्रू दिस। तो हम लोग हर एक लाइन में नेम चाहिए, तो हम लोग अगेन स्प्लिट कर सकते हैं। वार ऊपर हियर कॉल इक्वल टू कॉलम्स के लिए अगेन हर एक जो लाइन का पर्टिकुलर इंडेक्स आएगा मेरे पास ith इंडेक्स, उसको अगेन स्प्लिट करते हैं बाय द कॉमा फॉर माय सेपरेशन। ओके, console.log कॉल, ठीक है। दोबारा स्प्लिट किया, देन लेट्स चेक। अब देखो लास्ट में क्या हो गया, लास्ट वाले तीनों इटरेशन में वन अलग हो गया, एप्पल अलग हो गया, बनाना अलग हो गया, मैंगो सभी अलग हो गए। दोबारा स्प्लिट कॉमा से करते हो। इट मीन्स आई कैन प्रिंट ओवर हियर। अगर मुझे चाहिए तो मुझे सिर्फ नेम प्रिंट करना था, रिक्वायरमेंट थी, तो दैट सेकंड वन ऑफ इंडेक्स एट द नेम। तो लेट्स प्रिंट, देखो मेरे पास सिर्फ नेम आ गया सेपरेटली। क्लियर दिस पार्ट? Anyone any query about this? Okay. So that's it. Then I'll share the assignment on this one. Okay, on parsing also, on the modules also. You have to complete those assignments. Okay. And then that's it for today. Let's meet tomorrow. Anyone any query first? No. Okay, then fine. Then that's it for today. Let's meet tomorrow. And one more requirement complete. Okay. थोड़ा सा node.js practice कर लो, because tomorrow I'll be starting asynchronous programming. So for that you'll need a lot of practice. Okay. And thank you everyone. थैंक यू सर। फाइल शेयर करते हैं। हाँ मैं शेयर करता हूँ। ओके सर। I'll share the zip file. मैं सारा कोड शेयर करूँगा। थैंक यू सर। Okay, thanks.